should I choose? The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. आ गया मैं Ancient alchemy truly is fascinating. Which should I choose? The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port. Paimon coming in! Paimon coming in! Is this level okay? Can you hear Paimon? Ancient alchemy truly is fascinating. Don't want to add to Anthony's stress. Have you decided where you will go from here? If not, why not find a patch of soft grass and rest a while? Commercial port in all of Tibet. Ancient alchemy truly is Which should I fascinating. choose? ये ऑफिस भाई क्या हाल है मैं ज़रा रियल क्विक लिंक शेयर कर देता हूँ लेट्स सी मेंटेनेंस का क्या मिला ये क्या चीज़ है अभी और भी कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं इसमें ये सुप्रीमोस क्या बात कर रहा है अभी से थोड़ी ना आया है वो स्किन आ चुकी है सिटलाली की सेल पे भी है सिंड्रोन है न्यू एरिया आ चुका है क्या शायद से आ चुका है Even when the night is gone, ये आयुष भाई क्या and हाल है even when the sky is hidden from view, still the moon shines its light upon. पहले इवेंट्स देख लेते हैं एक फ्री स्किन मिलेगी एक फ्री शार्लेट कॉपी मिलेगी 40 दिन का टाइम है नया एरिया आ चुका है ओके तो we can just complete the request to enhance the following characters enhance करने के लिए है ये
ओके, तो पहले मुझे देखनी पड़ेगी सिंड्रो ने। मस्त वर्ल्ड पुश कर रहा हूँ, वर्ल्ड क्वेस्ट नाइस यार। पूरा डिज़ाइन चेंज कर, आई मीन उसका जो है ना थोड़ा कलर्स चेंज हुए हैं डिज़ाइन में। जैसे क्रिम्सन रेड था वो, क्रिम्स उसका जो रेड था वो पहले डल था, अभी क्रिम्सन रेड हो चुका है। आई थिंक उसको बफ भी मिला है। ओके लेट्स सी। ओह, तो वो धीरे धीरे कूल डाउन भी होता है। ओके, चार्ज अटैक एलिमेंटल स्केल। ओके, ओह इंस्टेंट हुआ उसका। एलिमेंटल बस्ट। Let's test my hypothesis. पीची यामिको सुक्रोस। Emerge. हाँ, मेरा कीबोर्ड, हेलो कीबोर्ड। नो वे भाई, मेरा कीबोर्ड डिस्कनेक्ट कैसे हो गया? ओके लेट्स सी। Right now. Right here. Emerge. नो वे भाई, मेरा कीबोर्ड बग कर रहा है। ओके, तो एडी ढंग से वर्क कर रहे हैं, डब्लू वर्क नहीं कर रहा है मेरे लिए। कांड हो जाएगा यार अगर डब्लू वर्क नहीं करेगा तो। यप, डब्लू खराब हो गया मेरा। ओह माय गॉड। भाई अभी मेरे पास स्पेयर में कीबोर्ड भी नहीं पड़ा है। कुछ न्यू कीबोर्ड ऑर्डर ऑन ब्लिंकिट। टाइम लगता है भाई, और गेमिंग थोड़ी ना आता है ब्लिंकिट पे। आई थिंक अभी वर्क कर रहा है। अचानक से क्यों भाई? मुझे लग रहा है कि अभी इसके फाइनल डेज आ चुके हैं कीबोर्ड के। Right here. Come on, keep up. फील्ड में है वो, बट शायद क्रायो अप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके, तो क्रायो कंसिस्टेंट चाहिए। Absorption test. Enhanced animal module 75. Come on out. ओके, वापस से बंद हो गया मेरा। हाँ।
फॉर रियल भाई। वो अपनी मर्जी से चल रहा है, अगर चल रहा है तो चल रहा है, और अगर वो रुक रहा है तो फिर रुक रहा है। Right now. Come on out. I think gaming keyboard is on Blinkit। कौन सी गेमिंग कीबोर्ड है, Blinkit एक बार देख लेता हूँ। Ancient alchemy truly is fascinating. ज़्यादातर आउट ऑफ स्टॉक्स है, आउट ऑफ स्टॉक है ज़्यादातर। इतने तो अच्छे कीबोर्ड है भी नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक कैसे हुआ? Have you decided where you will go from here? If not, why not find a patch of soft grass and rest a while? The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. Ancient alchemy truly is fascinating. हे भगवान, ये रैंडम चीजें होती हैं मेरे साथ। ओके लेट्स सी। डब्लू में होल्ड कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ मल्टीपल टाइम्स। Welcome. How can I help you? ए स्पैम कर रहा हूँ, डब्लू स्पैम कर रहा हूँ। वाह भाई, यप एवरी 4 to 5 टाइम्स में स्किप हो रहा है वो। आई मीन ओह माय गॉड भाई, Welcome. How can I help you? कल तो सही चल रहा था, पूरा चला गया क्या? कल सही चल रहा था, आज प्रॉब्लम आ गई है इसमें। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम आई है। और वो मैं एक बार टाइप कर रहा हूँ डब्लू, तो वो 2-3 बार हो रहा है, अगर हो रहा है तो। The neighboring nation of Liyue has the most डब prosperous. ASD वर्क सही कर रहा है, डब्लू अपने हिसाब से चल रहा है। यप Ancient alchemy truly is fascinating. दूसरे पोर्ट में लगा के देख सकता हूँ उसको। Even when the night is gone, and even when the sky is hidden from view, still the moon shines its light upon you. Right here. Right now. Right here. How tiresome. A spot of tea time entertainment. 48K Wheel of life. Right now. Right here. Swirl, Mark 2.
Let's test my hypothesis. और बिना उसके डैमेज कम है। मैं ट्राई नहीं करी सिंड्रो ने, इतना ज़्यादा अच्छा गेम प्ले तो नहीं लगा मुझे उसका। वो सिर्फ एक न्यू रिएक्शन लेके आ रही है हमारे लिए, बस और कुछ नहीं। Fulfill our pact. Rise like smoke. Get. Cool it. This moment will be यहाँ पे frozen. साइयो क्यों है? And away I go! Come on out! Show no mercy. You two. Time to. Many happy returns. Congratulations. Sorry, pal. Dodge this. Don't get frostbite. Bye! Fulfill our pact. Eat Laline. Eat Papa. Up to it, Monzai. So. Ja. So. Ja. Freeze. This moment will be frozen. Come on out! Show no mercy. Suffer the wrath of. Mighty mythical feast. Ha. So. Ta. 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 मैंने अल्ट नहीं किया। ओह, मैंने सिखलाली का अल्ट नहीं किया, तभी मेल्ट्स नहीं हो रहे। क्या फर्क पड़ता है? अरे अभी ठीक वर्क कर रहा है डेव में। हाँ, कहीं मुझे नया कीबोर्ड लेना ही पड़ेगा। Think you can bully me? Lights out. Let's light it up. I'm going in. Many happy returns. Ta. Ta. So. Look at you, Boozhound! Shake it! You can't run. Shiver. Everybody stand back. Up to it, Monzai. उन्होंने डायना के ट्रायल में गेमिंग को क्यों डाला? ये को भी डाल देते हैं। लेट्स सी ये क्या टीम है? Providing cover fire. No, my sword. Let me weave you around. Frost is coming. स्टैमिना कैसे यूज होता है कभी समझ में नहीं आया। Engaging. Now's our chance. Commencing cleanup. Getting gear.
Pair. Getting gear. Pair. I'll protect us. Huh? Witness the power of Gugwa. Rain outlines your fate. Providing cover fire. Let's keep going. Getting gear. Going under. Pair. मोरा नहीं है मेरे पास। कौन सा वेपन एक्चुअली अच्छा है? मिजुको का वेपन अच्छा है क्या? Elementary mastery is increased by 120 for 60 seconds. After triggering sword, elementary mastery will be increased by 96. For 9 seconds, wielder elemental skill hit an opponent. Elementary mastery. भाई कितना EM दे रहा है ये वेपन? आर्कन क्वेस्ट नहीं आई है अभी तक। प्रोबेबली बस एक वर्ल्ड क्वेस्ट आई है। लेट्स सी कि एक्सपेंशन है कहाँ पे। यहाँ पे है। बात नहीं करूँगा इसको मैं। एक स्टैचू होगा उसके पास। हाँ वो देखा मैंने अभी। जो किसी का टैलेंट डोमेन है क्या आज? कितने क्राफ्टेबल है? 5। आई थिंक मैं पहले मोरा फार्म करूँगा थोड़ा। मोरा की हमेशा कमी रहती है भाई मेरे को। ये सब चीज़ क्या है ये? अभी कीबोर्ड के लिए इजियर बना दिया है। अपडेट के बाद से मेरा गेम थोड़ा सा वर्स चल रहा है। और मोहित क्या हाल है? क्या चल रहा है?
क्या बात कर रहे हो? किस चीज़ के लिए हेल्प चाहिए तुम्हें? अपडेट के बाद से थोड़ा सा परफॉर्मेंस इश्यूज आए हैं, शायद कुछ किया है उन्होंने। Forest, protect us. जब लैग एक्चुअली महसूस हो रहा है। व्हाट? Teamwork is dream. For the Lord of the Night. Submit your souls in sacrifice. Thunder! The abyss is burning. You poor lost. I'm going in. $47 50 बट 50-50। तो उसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ भाई मैं तुम्हारी? Adventure time. Adventure time. यू कैन डू थिएटर इन माई ID। नहीं, मेरा गेम थोड़ा सा लैग कर रहा है और मेरा कीबोर्ड मुझे करंटली इश्यूज दे रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। Leave this. Leave it to me. The story has only just begun. Let's light it up. Teamwork is dreamwork. ऑफ कोर्स ये टीम अपने आप को मार देगी और उसका कूल डाउन नहीं जाएगा अल्ट पे से। I'm going in. By the frost moon of old. Will I become a star Yep. in the sky? लैग हो रहा है अलग, बर्निंग डैमेज हो रहा है अलग। Get back! You poor lost. Off we go. Adventure time. उन्होंने कुछ वो किया क्या, फ्रेम जनरेशन वगैरह ऐड किया क्या? मैंने नोटिस नहीं किया, अगर किया है तो। नहीं, अपस्केलिंग भी नहीं ऐड किया उन्होंने तो। ऑलरेडी वर्स्ट परफॉर्मेंस उन्होंने और वर्स्ट कैसे कर दी? बस एक होना चाहिए। Leave this place. A lament for the Teamwork is dreamwork. use of force authorized. ओ भाई ये कहाँ से स्पॉन हुआ? Forest, protect us with one heart. Everybody stand back. आई थिंक इसी रीजन की वजह से सब लोगों को निकोल चाहिए होती है ये टीम के अंदर। हाँ बट ये नाम है किसके? What a waste of Leave time. this. Thunder! A lament?
अविराज भाई क्या हाल है? Get back! You poor lost lamb. Did it take too long? आई थिंक वो कीबोर्ड वाली आदत लगने में थोड़ा टाइम लगेगा। यूंगी मून पे जा रहे हैं तो पहले उनसे बोला जाता। कोई एनपीसी है शायद से। कन्वर्ट भी करना है। ये एक ही है मेरे पास। ड्रीम सॉल्वेंट भी एक ही बचा है अभी। मोरा कहाँ है? हाँ आज आई थिंक आज भी इनफ मोरा मिला नहीं है, लेकिन डेलीज क्लेम करके अगर मिलता है तो। Add Astra. Add Astra. Thank you for 39K। हम्म, 50,000 मोरा अभी भी कम पड़ रहा है। Haven't you This realm is. If you ever have any. This realm is true. अभी भी क्या ग्लो कर रहे हैं? अच्छा इसकी वजह से शायद कुछ नया ऐड हुआ होगा। If you ever have. अरे मोरा नहीं है ना मेरे पास। रेजन है तो सही मेरे पास। Ah, ड्रीम सॉल्वेंट्स की कमी है।
The abyss is burning. That was quick. Tremble. I won't judge. Devouring claw. The abyss is burning. Shit. Off to the freezer! Huh? Oh, ow! Where did that come from? Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my luck, the opposite is probably true for me. Benny's adventure team, assemble! Oh. Or not. Okay. Let's see. यहाँ पे किलो चल सा. यार क्यों नहीं दिया इसने? The abyss is burning. The taste isn't right. बॉम्ब था क्या वहाँ पे? बॉम्ब है ये. What the hell? Everybody stand back! वो नॉर्मल वाले बॉम्ब्स कम थे जो ये भी है अब यहाँ पर. कहाँ पे है ये और? A little amuse-bouche! Huh? Adventure time! बॉम्ब्स ही है भाई ये. Get back! A lament for the leave none stand. A dash of frost! Huh? Let's light it up! A turning point in tremble. I won't judge.
story has only just... Everybody stand back! Stay away from me! Off to the freezer! Huh? Yeah! Huh. Teamwork is dream! Struggle all you want. A little amuse-bouche! Goose on the loose! Let's light it up! Everybody stand back! The abyss is burning shadow! यो स्टार्टर भी क्या हाल है क्या चल रहा है तुम्हारा प्लान है सिंड्रोने निकालने का आई थिंक तुमने बताया था लास्ट टाइम कि तुम सिंड्रोने पुल करोगे Off to the freezer! Huh? A lament for the... Huh? वो अभी तक आया ही Lightning नहीं never है miss! Teamwork is dreamwork! thunder! A little amuse-bouche! उसके पास ही जाना पड़ेगा लग रहा है Tremble! I won't judge. A dash of frost! Get back! Element? तूने ड्रॉप नहीं किया कुछ Let's finish this fast! Element for the... A little amuse... Huh? Everybody stand back! Let's fight! Run if you know it. Smash to scorch. Which will it be? Thunder! Element for
still living for you. Come on! I knew you couldn't devouring claw! Stay! Everybody stand back! Leave none stand. Horrible! Devouring claw! Element? Huh? I'm going in! A little amuse-bouche! The pinnacle of excellence! Stay away from me! Huh? Everybody stand back! Tremble. I won't judge. Like lambs to the slaughter. My weight was not in vain. Off to the freezer! Devouring claw! The abyss is Huh? Teamwork is dreamwork! new. Leave none stand. Tremble. I won't judge.
Let's fight! A dash of frosting! Tremble! I won't judge. Now's our kick. A little amuse. Thunder! Stay away from me! Ah! The abyss is burning! A dash of frost. Adventure time. All right, let's finish this dash. I'm going in. That was quick. A little amuse. Let's finish this next time. हाँ दूर है ये लोग बहुत। मुझे लगा पास में ही होगा। The rain's getting heavy. Who knows what the floods will wash away? Leave none stay. हाँ, ये आ पाएंगे? वो वाला तो अटक गया है। The abyss is burning! Shut! Huh? Let's light it up! Stay away from me! A dash of frosting! I think फार्म कर लिया मैंने सारे।
The feeling of the warm sun as it burns off the moisture in the air. I'm sure I can capture it in a dish. I just need to strike. Let's get down to Off business. to the freezer. Devouring claw! Huh? The abyss is burning! Everybody stand back! No fairy tale ending for you. Let's get down to business. Leave it to me! Decay! You more! Huh? To the fairy. Teamwork is dreamwork! Finally, to the fairy. Yang aku nih kemana nih? Rain's getting heavy. Who knows what the floods will wash away? Watch out! Decay! You... I'm going in! Like lambs to the slaughter. Let's fight. A little amuse. The abyss is burning! Finally, Everybody stand back! Leave none stand.
Oh, the sky's clearing up. It's like those showers never even happened. Let's fight! ओ यहाँ पे ड्यूटी है. Let's get down to business. The abyss is burning! Teamwork is dreamwork! Finally, leave none stand! Off to the breach! Get back! The abyss is burning! Huh? Fairy, I'm going in! struggle all you want! What? ये ऐसे आइसोलेटेड आइलैंड पे क्यों हैं ये लोग? क्यों जीते हैं ऐसे? Devouring claw! Let's fight! Finally, no. Let's get down to business. Back! Element? A little elusive! Huh? Everybody stand back! Oh my God, भाई ये ऐसे अकेले क्यों रहते हैं ये लोग? ऐसे एक टेलीपोर्ट वे पॉइंट है, जाके अनलॉक करना पड़ेगा.
यो आ गया। Get back! The abyss is burning! Let's light it up! Teamwork is No fairy tale ending for you. The fairy. The fairy. off to the breeze! Thunder! The abyss is burning! Finally, I... Leave none stand. The fairy. Devouring claw! The abyss is burning! Finally, I... Adventure time! Get back! A little... yeah! Everybody stand back! More! Get back! Attack! Stay away from me! Finally, I get the fairy. Finally, Let's light it up!
आई थिंक फार्म हो गया ये भी. Oh, I... Hey! The Fontanalia Film Festival should be happening over in Let's head over and check it out. Maybe there's even something we can help with. Come on, keep up. A spot of tea time entertainment. Emerge, right here, right now. I'm always watching. Oh, right here. What a noose. Emerge, right here. Life goes on. Enhanced Animo module? How tiresome. Come on, keep up. Let's test my hypothesis. somehow read किया उसने. Show them. A sight to behold. Right here. That's quite enough. Emerge. Orders given. Orders received. Cool it. Oh, so sorry. I'm out of here. Ninjutsu. Get to work. Lolene, eat Papa. Many happy returns! Freeze! This moment will be frozen in... Almost dodged that. Show no mercy. You two. Up to it, Manzai! Cha, ha. Ta. Ja. Ha. Ta. So. Okay. Oscillation 0 क्या दिया उन्होंने? Cool it!
so sorry. Got a dash. Come on out. Lolling, eat Papa. Many happy returns! Yeah! Punishment! Think you can bully me? Diana? Huh? Teamwork is dream. Up to it, Manzai! Cha! 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 Judgment! Shiver! Huh? I'm going in! Many happy returns! Final warning. No, my sword! Let me read you a verse. Dead reckoning. Frost is coming. Pair. Frost is coming. Pair. Frost is coming. Pair. Huh? Witness the power. Providing cover fire. Commencing cleanup. Getting gear. Pair. Getting gear. Pair. Final warning. No, my sword! Only 3 energy recharge. क्या पीस है? You want to learn some Yeah. Favonia's blade work? मैं तो फेंकने के लिए ही बनाया है.
All right then, I'll teach you. Oh yes. I'll teach you all right. Mark my words. इधर कुछ काम का है क्या मेरे? हम्म, निकल के साथ ये शेयर करता है अपनी बेटी। नहीं, मैंने कभी निकल पर विश किया नहीं, पता नहीं। बस कितने कितने विशेष हैं टोटल? 36 विशेष हैं, 37 ऑनेस्टली। रिस्की तो है। 4 स्टार्स कौन से फीचर्ड है यहाँ पे? 4 स्टार तो सारे ही हैं। We will see, we will see। तो पिटी कितनी थी बैनर का? 90 की पिटी है इधर भी। अगर कैरी ओवर होती इसमें पिटी तो ज़्यादा सही था, गारंटी कैरी ओवर होता था। You know what, you lucky डोम तो वापस जाने का समय आ गया है। Aristocratic. Illusion shattered! Let's light it up! Everybody stand! Crush! Flood of frost! Beg for mercy!
What the hell? ये स्टार्ट्स जिस सेट पे चाहिए उस पे क्यों नहीं आते? There is no escape! Scratch that! Ha! Yeah. Shudder! Can't handle your drink. Uh-oh. Think you can bully? Crush! More speed. Illusion shattered! Shudder! More speed. Shake your ass. Shine down! Huh? I'm going in! Crush! Vengeance will be mine! Shudder! Crush! More speed. There is no escape! Think you can bully me? Diana special. Illusion shattered! Shudder! I condemn you! हाँ This realm is... If you ever have...
More speed. More speed. More speed. बस यहाँ पे नहीं है, ओके यहाँ पे है। Next time, be sure to. यो मिल गई है अभी सिंड्रो ने मेरे को। नाइस यार। कितने पेटी पे मिली? 50-50 थी या गारंटीड? More speed. 79 पे 50-50। तो स्लाइटली हायर सॉफ्ट पेटी पे मिली है, बट एटलीस्ट मिल गए। नाइस। गुड लक वैसे बिल्ड करने के लिए। वो तो नहीं तो यहाँ लोग 50+ जाके भी लूज करते हैं। आई थिंक तुम मेरी ही बात कर रहे हो, बट ओके। More speed. कहाँ पे है ये? तो उधर है। More speed. वही ना, वैसे कुछ कुछ मैटर नहीं पड़ता भाई उसमें, हारना और जीतना गेम का पार्ट ही है। बट कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमको मिल गई। 50-50 विन करी तुमने। नाइस। अभी क्या प्लान क्या है? कौन सी टीम में यूज़ करोगे उसको? या मिको, चीची, सुक्रोस, या फिर कोई और टीम? जब एक्सपेक्टेशन कम रखो तो मिल जाते हैं। तो कम्प्लीटली रैंडम होता है। मैं तो वैसे कभी एक्सपेक्टेशन अभी रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन नहीं होगी तो डिसअपॉइंट नहीं हो सकते।
More speed. For now I will pull, क्या कहते हैं, अभी तो मैंने उसे चीची C2 एस्कॉफियर ऑफिशियल C6 और बाद में इसकी डेडिकेटेड सपोर्ट टीम करूँगा। अरे तो करंटली क्या चीची एस्कॉफियर ऑफिशियल। आई थिंक अगर तुम्हारे पास बेटो है तो तुम फिशल को रिप्लेस कर सकते हो। लाख क्यों हो रहा है? मैं तो पहले ही कहा था नहीं मिली तो कोई बात नहीं। बेडो C4 है, हाँ तो C4 बेडो यूज़ कर सकते हो ना उसके साथ। बेडो के लिए क्या चाहिए होता है पॉइंट। लेट्स सी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन 3 से लेवल इंक्रीज करता है एंड द ड्यूरेशन ऑफ द ये ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म ब्रेकर द इलेक्ट्रो रेजिस्टेंस ऑफ सराउंडिंग ओपोनेंट विल बी डिक्रीज। तो हाँ इलेक्ट्रो श्रेड नहीं मिलेगा तुमको, बट ठीक है ये डाल सकते हो। बट एक और चीज़, हम स्कॉफियर को क्यों डाल रखा है तुमने उसमें? आई मीन उस टीम, मुझे नहीं मालूम कि उस टीम में स्कॉफियर वर्क करेगी या नहीं, बट जितना मुझे मालूम है कि स्कॉफियर को एक्सक्लूसिवली फ्री टीम में ज़्यादा बेटर चलती है वो, क्योंकि उसका कोई पैसिव होता है आई बिलीव। कहाँ गई स्कॉफियर? ये रहा कि अगर उसकी टीम सिर्फ हाइड्रो प्रायोसिव होगी तो फिर क्या कहते हैं उसको 55% वो मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, ये स्किल एंड एलिमेंटल बर्स्ट डैमेज, शायद से ये है कि उसका डैमेज इंक्रीज होता है 55%। बट ये पूरा किट पढ़ना पड़ेगा उसके लिए मुझे, बट मैं नहीं पढ़ रहा अभी। हाँ श्रेड मिलता है, 55% श्रेड मिलता है। 15% रेस्ट प्लस ऑफ फील्ड क्राई एप्लीकेशन। बट वो ये भी तो देखो 55 मिलता है, 15 और 55 में बहुत डिफरेंस हो जाता है। और उसको हाइड्रो और क्रायो चाहिए था। 1 2 हमारी टीम में कितने हैं? चीची भी है तो हाँ 3, 15% मिल रहा है। तो बिना इलेक्ट्रो के सुपर कंडक्टिंग चलेगी नहीं, सो जो भी हुआ है स्टेला कंडक्टिंग नहीं चलेगी। More speed. और अगर तुम स्टेला कंडक्ट चलाओगे तो तुमको 55% डिफेंस रेट नहीं मिलेगा। तो आई डोंट थिंक सो इतना कुछ ऑफर कर रही है स्कॉफियर टीम में, या क्या नाम है क्राई एप्लीकेशन के अलावा। अगर तुम्हारे पास सिटलाली होगी तो बेटर रहेगा। ये वर्ल्ड क्वेस्ट तो पीक है मून वाली, क्या बात कर रहे हो, मैंने भी करी नहीं है। कौन सा डिवाइस है? एसर नाइट्रो 5 RTX 3060 16 GB रैम आई बिलीव, और राइजन 7 समथिंग, आई डोंट नो समथिंग। ये वाले ऊपर है क्या माउंटेन पर? फिर नहीं कर रहा मैं इनको फार्म। वैसे मेरा रन के लिए रेजन कंप्लीट हो चुका है। सिटलाली है ऑन टेनेसिटी TTDS। हाँ सिटलाली डाल दो टीम में, क्या दिक्कत है, तुमको शील्ड भी मिल जाएगी। एस्कॉफियर उतना कुछ कर नहीं रही, तुमको अगर डिफेंस रेट चाहिए ही तो मैं बोलूँगा कि डिफेंस रेट किससे लेके आ सकते हो तुम। वी डिफेंस रेट नहीं करेगी, और डिफेंस रेट का पता नहीं है अभी, क्योंकि अभी उसकी ऑफिशियल टीम नहीं आई है अभी तक। क्या पता कि जो उसकी सपोर्ट कैरेक्टर आए वो तुमको डिफेंस रेट दे। लेकिन चीची है ना बहुत पावरफुल इतनी पावरफुल नहीं हो चुकी आई बिलीव कि वो कितना कुछ 48 समथिंग % स्टेलर रिएक्शन डैमेज बोनस देती है वो। स्टेलर रिएक्शन डैमेज बोनस स्ट्रेट अप डिफेंस इग्नोर करता है, लेकिन क्या कहते हैं एलिमेंटल रेजिस्टेंस नहीं करता। तो एलिमेंटल रेजिस्टेंस चाहिए ही होगा तुमको।
मैं अभी भी बोलूँगा कि स्कॉर्पियर से बेटर यहाँ पे वही रहेगी, सिर्फ लाल ही रहेगी। कैटली शील्ड मिलेगी तुम्हें और 20% अटैक बोनस मिल जाएगा। Shake it, and motion to compel. ओ, ये तो गलत कैरेक्टर है, ये कैसे आ गई यहाँ पे? यहाँ पे क्या कर रही है यहाँ पे? चल, लोकल स्पेशलिटी के लिए निकाला था मैंने उसको। I won't hold you ये back. मैंने ये वाले अकाउंट पे एक्चुअली पुल किया था निकोल के लिए। अब अभी नहीं, अभी मैं सोच रहा हूँ शायद से मैं ये कैश फ्लो सुपरविजन निकाल सकता हूँ, बट मेरे पास इनफ पुल्स नहीं है। बट निकोल के बैनर पे मैंने पुल किया था ये अकाउंट में और मेरे को डेया मिली थी। अगर मुझे यहाँ पे निकोल मिल जाती तो मज़ा आ जाता ऑनेस्टली। अभी डन वर्ल्ड क्वेस्ट नहीं, अभी नहीं, अभी मैं बस डेलीज कर रहा हूँ। अभी मैं बस थोड़ा सा आराम से ग्राइंड करूँगा। मुझे ये वाले पैच में कुछ रश का कुछ पॉइंट नहीं है। मेरे को कोई स्पेसिफिकली करेक्टर के लिए पुल नहीं करना। प्रोबेबली ये मेरा पूरा पैच ही स्किप रहेगा। अगर मुझे करना होगा तो फिर मेरे को वेपन्स ओनली अकाउंट में पुल करना है राइडन के वेपन के लिए, और शायद से अपने ऑल्ट अकाउंट पे कोलम्बिना के लिए ट्राई करना है। उसके अलावा कुछ नहीं है मेरे लिए इस पैच में। अभी नहीं, आराम से करूँगा, वही आराम से करना। मैं भी आराम से ही करूँगा। There is no escape. Teamwork is strength. Beg for mercy. Freeze to the core. Shudder. More speed. Rack and ruin. इतना रश मुझे पसंद नहीं। अगर किसी करेक्टर के लिए पुल करना होता तो शायद से रश करना पड़ता है, कोई चॉइस नहीं होती। कभी मिलेगा मुझे अच्छा अच्छा आर्टिफैक्ट्स, कभी मिलेंगे। मैं यहाँ से रेयरिटीज नहीं कर सकता, सोर्टिंग नहीं कर सकता रेयरिटी की, मतलब फिल्टर आउट नहीं कर सकता 3 स्टार वगैरह सब कुछ, क्योंकि ये आर्टिफैक्ट मैं डिलीट ही कर रहा हूँ। 2 स्टार रेयरिटी तो मैं डिलीट ही कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा मोहरा कॉस्ट करती है 2 स्टार रेयरिटी। 3 स्टार फिर भी ठीक है। फिर कोई वे होता है इनको फिल्टर आउट करने का, तो मैं चेक कर सकता कि मैंने कितने आर्टिफैक्ट रह रहे हैं। मेरे पास कितने एनकाउंटर पॉइंट्स हैं? यस, 99। आई थिंक टेम्पल ऑफ स्पेस एक्सप्लोर करने का एक तो फ़ायदा हुआ। ये भी टेक केयर। एक्सप्लोरेशन करने का एक तो फ़ायदा हुआ कि मुझे एनकाउंटर पॉइंट्स चाहिए थे और मुझे काफ़ी मिल गए थे। अभी लॉन्ग टर्म तक डेलीज का तो प्रॉब्लम नहीं आएगा ये अकाउंट का। Add Astra. Add Astra. Thank you for completing. विक्की भाई क्या चल रहा है विक्की भाई? सिंड्रोने पे पुल किया तुमने? You're high up. Can hear your voice. Haven't you heard? Fresh There's a fruit. strange world. इस बालक की स्टोरी बताओ।
कुछ नहीं भाई, एक दिन मैं बैठा था, मुझे यूज़र नेम चाहिए था। मैं सोच रहा था कि मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है खाने के लिए। तो मैं नॉर्मली डेजर्ट्स पे अपना नाम रखता था, जैसे रसमलाई, रसगुल्ला वगैरह। फिर मैं सोचा कि नहीं ना, क्या और क्या लगता है मुझे, सब्जियों में कौन सा खानी चीज़ अच्छी लगती है। मुझे लगा हाँ पालक, आलू पालक अच्छा लगता है। तो ओरिजिनल यूज़र नेम आलू पालक 03 था। फिर उसके बाद मैं उसको थोड़ा वो ट्विक करके पालक बॉय 03 कर दिया, बस और कुछ नहीं। ज़्यादा नहीं सोचा मैंने नाम रखते वक्त। Hey! The Fontanalia Film Festival should be happening over. मेरी आईडी में पुल कर दो फ्री के प्रीमियम्स पे। हाँ, मुझे समझ में नहीं आया बट हाँ, हम गुड भाई। हाँ, स्टिल हम गुड भाई। ऑनेस्टली मुझे उतना पुल करना अच्छा नहीं लगता। ये वाले काइंड ऑफ टाइम, क्या नाम है इसका, करेक्टर प्रीव्यू मुझे अच्छे नहीं लगते ये वाले ट्रायल करेक्टर्स। तो एक अलग ही अरीना बना के रखना होता है फालतू का। Let's head over and check it out. Maybe there's Okay, even let's something we can help with. Take a break. A spot of tea time entertainment. 75 पेटी है, मिल जाएगी, क्या दिक्कत है। पर पुल क्या कर रहे हो, सीट ला ली या सिंड्रो ने? Right now. Emerge. Right now. I'm always watching. Come on now. Emerge. Right now. Swirl. Mark 2. Come on. Keep up. What a joke. उसका अप टाइम भाई 100% है। How tiresome. ये तो तुम्हें स्विच ही करने की जरूरत नहीं है। Take a break. A spot of tea time entertainment. कर लो भाई, पुल मिल जाएगी। Get to work. I'm tired already. क्या वॉइस लाइन्स है भाई इसके। Freeze! Don't get frostbite. Ninjutsu. Show no mercy. You two. Time to end them. Hop to it, Manzai! Cha. Zo. Za. Cool it. Oh, so sorry. Fulfill our pact. See Laline. He's pop. Ka.
ओके लैग तो रियल था। Many happy returns. अगर सर ग्रेनेट होता तो शायद पायरो इन्फ्यूजन मिलता थोड़ा बहुत। Mighty mythical beast. Freeze! Don't get frostbite. Ninjutsu! Show no mercy! Suffer the wrath! Many happy returns. मैं समझू डैमेज है इसका। ओ भाई किसने बिल्ड किया है ये? क्रेडिट की स्किन अच्छी है, नाइस है। मुझे तो काफी बोरिंग लगी वैसे। इनमें से कोई कैरेक्टर नहीं है मेरे पास। मेरे पास टीची भी नहीं है, यामी को रिथॉसली, मेरे पास सिर्फ मिजुकी होगी प्रोबेबली बस। ये गारंटेड है, मेरी गारंटेड तो है। क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे उस पर पुल करना चाहिए। आई थिंक नॉय को आने में टाइम है। फैब सोर्ड, आई होप कि वो फैब सोर्ड हो। अब कागुरा भी नंगवांग के लिए नहीं रहा। हमारी प्रायोरिटी वैसे कागुरा नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पे, क्योंकि आसपास कागुरा आ रहा है। तुमने पहले भी बोला था कि कागुरा निकालूंगा मैं उसके लिए, बट क्यों निकाल अभी भी सकते हो तुम। तुम्हारे पास 20 दिन है। कागुरा का पैसे बढ़िया है, कागुरा का पैसे बढ़िया है, बट निंगवांग उसके तीनों स्टैक नहीं निकाल सकती। तो मान के चलो कि तुम्हें कितना 12% स्किल डैमेज मिलता है बस, तो तुम कागुरा निकालोगे भी तो सिर्फ 12% ही मिलेगा यहाँ का। स्टैटिस्टिक अच्छी है वो एक। और निंगवांग के लिए वैसे इवन दो कि इसका वो मैक्सिमम यूज़ नहीं कर सकती, बट फिर भी निंगवांग के लिए अच्छा है ये। उसको मैक्सिमम कितना होगा, 36% नहीं निकाल पाएगी। निंगवांग क्या है, बस 12% निकाल पाएगी इधर से, क्योंकि उसका कूल डाउन ज़्यादा है। शायद 2 निकाल पाएगी। इंक्रीज हुआ क्या 24%, 24 सेकेंड्स, क्योंकि पहले 12 सेकेंड कुछ था ना ये। आई थिंक 2 स्टैक्स निकाल पाएगी। निंगवांग का कूल डाउन कितना 12 सेकेंड का होता है। उसके किसी भी कॉन्स्टलेशन पे क्या निंगवांग को 2 बार ई करने को मिलता है क्या?
ओके यार, when jade screen shattered its cooldown will be reset. तो उसके कॉन्स्टलेशन 2 पे तुम उससे कितना निकाल सकते हो एक्चुअली? उसका कूलडाउन कितना है? उसका 12 सेकंड का कूलडाउन है। आई थिंक तीनों निकाल सकते हो ऑनेस्टली, पर देखना पड़ेगा। Using an elemental skill grant Kagura Dance effect, increasing the wielder's elemental skill damage by 12% as well as a stellar for 24 seconds. तो 24 seconds में तुमको 3 स्टैक्स निकालने हैं, और अगर तुम उसका E करोगे तो 2 स्टैक्स मिल जाएंगे तुम्हें, और फिर थोड़ा वेट करोगे 12 सेकंड तो इसके हाफ ड्यूरेशन के लिए तुमको उसका तीसरा स्टैक भी मिल जाएगा। तो निकाल तो सकते हो, बट मुझे ये नहीं मालूम कि वो तीनों का जो कूल डाउन है ये वो इंडिविजुअली काउंट होता है या एक साथ में काउंट होता है। All elemental damage bonus. This character will gain 12% all elemental damage bonus when they possess 3. तो all elemental damage bonus भी तुमको 3 possess करने पे मिलेगा, तो तुम्हें 12 सेकंड के लिए मिलेगा वो। निकाल तो सकते हो, चल सकता है, कुछ कह नहीं सकता। ओके लेट्स सी। तो अभी सिंड्रो ने है, फिर उसके बाद में कोलम्बीना और राइडिंग शो बनाएगी, दोनों में इंटरेस्ट नहीं। और नौ, क्या नाम उसका नए कैरेक्टर का नाम का नॉय है, ये जो भी नाम है उसका, उसको आने में टाइम है, तो प्रोबेबली तब तक मैं सेव कर पाऊंगा, तो मैं अपना गारंटी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। बट शुड आई? मेरे पास चीची नहीं है, मेरे पास पेडो ट्रांसलेशन 0 है, मेरे पास यामिको नहीं है। इवन दो ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग और इनेबल करेगा नए रिएक्शंस के लिए, बट कैन आई रियली यूज़ इट? अभी ये चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग हो गई है मेरे लिए। मुझे एक फीलिंग आ रही है कि मुझे शायद से स्किप ही करना चाहिए। स्किप करना बेटर रहेगा, मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा उसको। मेरे पास चीची भी नहीं है, मेरे पास यामिको नहीं है, मेरे पास बेडो कॉन्स्टलेशन 0 है। स्किप करना प्रोबेबली बेटर रहेगा। मोरा, ऑफ कोर्स मोरा। All right. Wind Strider! Shower me with praise! Let my name echo in
Bring it! Silence! Use the force on. The tides beckon. Wind Strider. Resistance. Shower me with praise! Let the world come alive! Settle down! As one with wind and cloud. Silence! Let the mountain's veins boil! Shower me with praise! Time to shine! Wind Strider. Settle down! Let the mighty be humble! मोरा वापस खत्म। Water बस comes एक in और रन many है क्या मोरा का? आई थिंक मेरे पास टेक्निकली 2 रन है। Strike a pose! Wind Strider. Bow your head. Use the force on. Let the world come alive! Resistance is futile. Bring it. Settle down! An oversight on my part. The tides beckon. Time to shine! Use the force on.
कितने पिटे हो गए हैं? मैंने 5 पुल यहाँ पर मारे तो थे। बिल्कुल ही हाई पिटी है क्या? बिल्कुल ही हार्ड पिटी है, स्टैंडर्ड बैनर पे भी। आई थिंक है क्योंकि 5 पुल तो मारे मैंने भी। वो सेंड करना था मैं अभी। Ad Astra. Ad Astra. Thank you for ओह 40 दिन ही रहा है अभी। लेट्स सी, मेरे पास कोई खराब आर्टिफैक्ट है फेंकने के लिए। 50 सेंट अभी नहीं फेंकूंगा। आई थिंक ये बेकार है, इसे फेंक रहा हूँ। इसका This realm is... If you ever have... The Fontanalia Film Festival should be happening...
काबरा का पैसिव इतना यूजफुल नहीं है निंगवांग के लिए। सुपर कंडक्ट डैमेज इंक्रीज करता है। अब बताओ तुम्हें क्या लगता है कि स्टेला कंडक्ट पहले से एग्जिस्ट करता था या फिर उसके अकाउंट में पैसिव थोड़ा चेंज हुआ है? अगर ध्यान से पढ़ोगे तो स्टेला कंडक्ट को इग्नोर करते हुए वो एलिमेंटल स्किल डैमेज या एलिमेंटल डैमेज बोनस भी इंक्रीज करता है और उसके 3 स्टैक्स मिलते हैं, तब जाके तुमको ऑल डैमेज बोनस भी मिलता Let's है। head over and check it out. Maybe there's even something we पूरा can पैसिव help चेंज with. कर दिया? नहीं, पूरा पैसिव चेंज नहीं किया। ओके, तो क्या मैं विश मेन्यू खोल सकता हूँ? यहाँ पे नहीं खोल सकता। एज यू कैन सी कि जो कागुरा वेरिटी है जो है वो पहले बस इतना होता था कि यूजिंग एन एलिमेंटल स्किल ग्रांट्स दिस इफेक्ट इंक्रीजिंग विल्डर्स एलिमेंटल स्किल डैमेज बाय 12%। बस यहाँ तक। ये एज वेल एज स्टेला कंडक्ट डैमेज बाय 12% ये ऐड हुआ है। और आई थिंक पहले जो ड्यूरेशन थी ना वो 24 सेकेंड की नहीं थी, कम की थी। इसलिए पहले मुझे लगता था कि निंगवांग वो तीनों स्टैक्स नहीं निकाल सकती, एक स्टैक निकाल सकती है। बट अभी क्योंकि उसकी ड्यूरेशन 24 कर दी हुई है और अगर तुम्हारे पास निंगवांग का कॉन्स्टलेशन 2 है, लेट्स सी, मेरे पास निंगवांग नहीं है, सब वेपन्स ओनली अकाउंट मेक सेंस। तो अगर तुम्हारे पास निंगवांग का कॉन्स्टलेशन 2 है, निंगवांग की तरह पहले ये रहे। तो निंगवांग के कॉन्स्टलेशन 2 पे जब भी उसकी जेड स्क्रीन शैटर होती है तो उसका स्किल रीसेट हो जाता है। और उसकी जेड स्क्रीन शैटर होती है जब भी वो अपना अल्ट यूज़ करती है। तो तुम ई करोगे तो तुमको 2 स्टैक्स मिल जाएंगे और 12 सेकंड वेट करोगे तो तुम्हें थर्ड स्टैक भी मिल जाएगा, जिससे तुम्हें एलिमेंटल डैमेज बोनस भी मिलेगा। तो तुम उसका 36% एलिमेंटल स्किल डैमेज बोनस निकाल सकते हो उससे। और उसके अलावा पैसिव के अलावा वो एक अच्छा स्टैट स्टिक है। तो कागुरा वेरिटी स्टिल बेटर है। गेंशिन ने क्वालिटी ऑफ लाइफ और दे दी। हाँ, वो देखा मैंने। तुम अगर किसी टीपी पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट टैप प्रेस कर सकते हो। उसके अलावा क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ हो मैंने चेक नहीं किया अभी तक। तो हाँ, कागुरा वेरिटी अभी भी निंगवांग का अच्छा है, हमेशा से था। आई थिंक वो ड्यूरेशन अगर उन्होंने इंक्रीज़ करी है पहले से तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि उसका पहले ड्यूरेशन 24 सेकेंड्स ही था या नहीं। उसका स्किल डैमेज इतना नहीं करती। यूवेंटस एक उसकी जेट स्क्रीन बिल्कुल डैमेज नहीं करती है। उसका स्किल डैमेज मल्टीप्लायर लेवल 1/230% है। भाई क्या बात कर रहे हो तुम? लिंगवांग की स्किल जियो डैमेज देती है, जियो डैमेज बोनस देती है, बस लिटिल डैमेज। ये लिटिल डैमेज है, 230% स्किल डैमेज है भाई ये। आई डोंट थिंक सो कि उसके बेस में उतना मल्टीप्लायर है कहीं पे। उसका सिर्फ एक चार्ज अटैक है जो बेस पे 174 है, स्किल उसका 230 है। आई थिंक अगर तुम उसका स्किल मिस कर रहे हो तो अलग बात है।
I smell rabbit. Six K. उसका मेन डैमेज आता उसके बर्स्ट से है क्या? इसका मेन डैमेज कहाँ से आता है? उसके नॉर्मल अटैक कॉम्बो से आता है या फिर उसके बर्स्ट से आता है? क्योंकि देखो स्टैटिस्टिक तो वो अभी भी अच्छी है ही, और तुमको 3 स्टैक मिलने पे लिमिटेड डैमेज बोनस भी मिलता है 12%। बट वो 3 स्टैक थोड़ा सा लेट आएंगे तो फिर बर्स्ट में प्रॉब्ली रुक के करना पड़ेगा। इसका मतलब फिर उस पर वो ही अच्छा है फिर। इसका बर्स्ट का डैमेज मल्टीप्लायर है कितना? और एक और भी चीज़ है, अगर तुम उसको स्टेलर कंडक्ट करो, उसका उसका बर्स्ट स्टेलर का लूनर डैमेज कर सकता है कि लूनर क्रिस्टलाइजेशन 87% पर जेम। और वो कितने जेम मिलते हैं? करेक्टर दैट possesses passes through geo damage bonus, ठीक है। charge attack does not consume stamina, 12 जेम at C0। इसका बर्स्ट पास बहुत कम है। मुझे तो अभी भी लगता है कि इसका डैमेज मल्टीप्लायर हायर होना चाहिए अगर 230% है तो। और अगर ये लूनर क्रिस्टलाइजेशन कर सकता है तो वो स्ट्रेट अप डिफेंस इग्नोर करेगा। बट पता नहीं, देखने की बात है। आई मीन निंगवांग है वो। गेंशिन ने I बहुत keep निगलेक्ट watch. किया है 4 You स्टार leave? कैरेक्टर्स का। You call me. आई थिंक फिर उसके लिए कोई स्पेशल वो नहीं है, वेपन नहीं है। अभी भी कागरा वेरिटी ही बेस्ट है उसके लिए, इवन दो कि उसका पैसे वर्क नहीं करेगा उसके लिए इतना अच्छा। तो मैं स्लाइटली थोड़ा इंक्रीज्ड बोनस एलिमेंटल स्किल डैमेज बोनस मिलेगा, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। स्टैटिस्टिक है वो बस। एनीवेज क्या करना था? कुछ तो कर रहा था मैं। ओह नो, इससे तो फाइट नहीं करनी ना। तीनों है क्या? डोमिनो फोर्जरी अवेलेबल फॉर लिमिटेड टाइम। अच्छा, सबके मटेरियल्स अवेलेबल हो चुके हैं। आई गेस इट इज व्हाट इट इज। Let's light it up! Everybody stand back! Ha! Booba, get them! Eat this! I'm going in!
ये स्पॉन Nice होते हैं। and spicy. Huh? Oh! Let the show begin. Lupica! हाँ, My Lupica! वो पायरो डैमेज करता है क्या? उसने वन शॉट कैसे किया भाई मेरे को? Ready, steady, go! और फिर डैमेज बहुत हो रहा है, इसका मतलब कि बारबरा की हीलिंग लेनी सही नहीं है। I kill you! Booba, get them! Huh? Oh. Teamwork is dream. हाँ, वो वैसे ही बहुत डैमेज कर रहा है। बट आई गेस वेपराइज का वन शॉट है। ओह माय Nice गॉड and भाई। spicy. You're toast! Huh? Keep back! यप, Take me back! इतना डैमेज क्यों हो रहा है मुझे? ओ, डोमेन की डिफिकल्टी इंक्रीज हो गई है, मैंने अभी नोटिस किया। हाँ, दिन शो भी नहीं है क्या? ये मिडशिफ्ट टीम क्या ही बनाऊं मैं? हम्म, पेल फ्लेम डोमेन कर सकता हूँ क्या? कौन सा गॉबलेट दिया उसने? अटैक गॉबलेट, ट्रिपल अटैक। यहाँ पे शील्ड चाहिए होती है ना, मुझे नहीं पता ये होगा नहीं होगा। Add the frying pan into the fire! ये लेवल 90 है भाई, कौन से लेवल का कर रहा हूँ मैं डोमेन? लेवल 90 की डोमेन है। टैलेंट्स अपग्रेड करने पड़ेंगे। Oh, I'm looking forward to this. हाँ, इंसिग्निया फार्म करना पड़ेगा। मेरा वर्ल्ड लेवल क्या है? मेरा वर्ल्ड लेवल अभी भी 5 है। लेवल 90 की डोमेन करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करूँ मैं?
काम करता हूँ इंसिग्निया चाहिए ना आई थिंक एक्सपी बुक से काम करनी पड़ेंगे इवेंचुअली मिलते रहेंगे सब कुछ Let's light it up! Dodge this! I'm going in! Eat this! What's the hurry? Booba, get them! Teamwork is dreamwork! This moment will be frozen in time. You're toast! Out of the frying pan! Cool it! Racing! I'm going in! Hey-ya! Get back! Oh, so sorry. Cool it! Out of the frying pan, into the...
Nice and spicy. Everybody stand back! Dodge this! Don't get frostbite. Cool it! Teamwork is dreamwork! Dodge this! Eat this! Freeze! This moment will be frozen in... The hunter becomes the hunter. Cool it! Boba, get them! ओवरलोड हो गया क्या मैं? अरे That Tingle Cross! Ow! Everybody stand back! अच्छा ये एलिमेंटल वो यूज़ कर रहे हैं ये बॉटल्स. He's in there. I got careless. Picked the wrong test subject. बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई. क्या बड़ी मिस्टेक हो गई भाई? Let's light it up! Out of the frying pan, into the fire! Huh? Teamwork is dreamwork! Not really. Eat this! Oh, so sorry.
हाँ, मैं सिटलाली पुल करने जा रहा था, इतनी जल्दी में ध्यान नहीं दिया और सिंड्रोने निकल गई। क्या बोलूँ मैं इसमें। सिटलाली पुल करने जा रहे थे, ध्यान नहीं दिया, पुल कर दिया आंखें बंद करके और सिंड्रोने निकल गई। कि क्या बोलूँ मैं इस बारे में। अभी क्या ही कर सकते हैं, जो हो गया हो गया। Off we go. Let's light it up. Boba, get them! Freeze! Ah! 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 Huh? Everybody stand back. You're toast! Dodge this! This moment will be frozen. अरे पीछे गया मैं फिर भी। इनका हर्ट बॉक्स बहुत वियर्ड होता है एनिमीज का। Out of the frying pan, into the... Cool it! I'm going in. ओके ठीक है, नहीं आने वाला उसका। Don't get frostbite. देखो पीछे जाऊंगा और ओके ठीक है, इस बार हिट नहीं हुआ। Ah! 35 का पिटी है, 15 दिन और 80 पुल हो जाएंगे। डिपेंड करता है भाई तुम्हारे गेम प्ले में, इस्तेमाल तुम जिस तरीके से गेम को खेलते हो उस पर डिपेंड करता है। उस पर भी डिपेंड करता है कितने प्रीमोस तुम्हारे वर्ल्ड में हैं, क्योंकि एक्सप्लोरेशन जो है ना तुम्हें जस्ट इनफ देता है तुम्हारे पिटी पे पहुंचने के लिए, ना कि पूरी पिटी बिल्ड करने के लिए ज़्यादातर केस में। और लोग ऑलरेडी काफ़ी सारे अपने सोर्सेज एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं, बट मुझे पता नहीं कि तुम कौन से एआर पे हो, तुमने कितना एक्सप्लोरेशन किया है, तुम कितना गेम खेलते हो, तुम कितना एक्सप्लोरेशन कर सकते हो। विल पावर वगैरह सब चीज़ होती है। कहने को तो हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि खेल कौन रहा है। Eat this! Boba, get them! Dodge this! ये शील्ड लगाएगा अपनी एटलीस्ट। इतना क्या वो पकड़ के रखता है भाई। Huh? Teamwork is dreamwork. This moment will be frozen. I kill you. हर एक गलत लोगों को मत मार। Let's light it up. ओके, इनकी शील्ड कैसे तोड़ूं मैं? हाइड्रो करेक्टर नहीं है मेरे पास करंटली कोई। Adventure time. Cool it. Probably better होगा स्विचेबल प्लेटफॉर्म कैरेक्टर्स। What's the hurry? ये लोग डिस्पॉन नहीं होंगे होपफुली। यार 50 पे हूँ, डेली 1 या 2 घंटे खेलता हूँ। हमें कर सकते हो ये इन रिचुअल्स को आना ज़रूरी था, और वो अभी तक आ रहा है। हाँ, मेरे को टीम कोई स्विच ही नहीं करने देगा। ये क्या एनिमीज किसने डिज़ाइन करे ये एनिमीज? I'll take care
care of पटुई it. की जो शील्ड होती है ना वो थोड़ा डिफरेंट बिहेव करती है। वो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से टूटती है, बाकी दूसरे एलिमेंट पे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी इनके पास शील्ड है क्या? अभी तो इनके पास शील्ड नहीं है। इनमें से कोई ना कोई एक अपनी शील्ड तो बनाएगा ही, होपफुली। इसने तो नहीं बनाई। उसने शील्ड बना ली तो इस पे इलेक्ट्रो डैमेज ना के बराबर हुआ। Everybody stand back! हो गए। एम भाई बंदे का मिस नहीं होता था, उसको कुछ डैमेज नहीं हो रहा। इलेक्ट्रो डैमेज इतना नहीं होगा। बट ऑन द अदर हैंड हाइड्रो उसकी इंस्टेंट ब्रेक करेगी शील्ड। You're toast! आई लाइक हाउ कि वो अपने तीनों शॉट मिस ही नहीं करता। Go, Barbara, go! Add Astra. Thank you for completing. Add Astra. We have put it. If you ever have it. I wonder when I'll be as. इनका किधर गया तेरा? Let me double.
My experiment... The incident is not quiet. Don't tell me something bad. I'm gonna sing it one more time. यहाँ पे है
da 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 da. I wonder when I'll be as tall as my big sister. Oh! Just sharpen my spear. Actually Nahida, aren't you? Paimon felt like Catherine was acting weird when we met at the Sub-Zero's festival. And Dunyarzad, did you save her? It's a really long story. We shouldn't disturb her. Her consciousness is still weakened. Let's chat somewhere else. How about by the Traveler's favorite bench? Let's talk about Dunyarzad first. It's such a relief that she's all right. After we parted on the last day of the Sub-Zero's festival, I left the city and saw what the Traveler had described. Among the countless dreams, I found one that was growing fainter and fainter. This proved my suspicion. Once Dunyarzad could no longer bear the Akasha harvesting her dreams, her consciousness began to dissipate. But this also meant it escaped the Akasha's control. Such a small fragment of consciousness can't last for very long, though. It will return to its original dream, where both will gradually fade until they completely disappear. I used all the power I had to keep her dying dream alive as long as possible, but it still wouldn't have lasted for much longer if it hadn't been for you two breaking the samsara. So it looks like we did manage to save Dunyarzad in the end. And not a moment too soon. Huh? Why are you two smiling so happily?
I thought you'd be so moved that you'd start crying. I need to spend more time observing human emotions. Both are fine. Everyone reacts differently. Alright, you two must have a lot of other questions for me, right? After all, you saved my faithful believer. As your reward, I will answer any and all questions. At the Avidia Forest, there was this incense that made the traveler fall unconscious and dream of a huge tree and a red sky. You also heard someone's voice, right? It said world and forget me. Yeah, so you do know! We've been wanting to ask you what that was about, and if the red sky was related to Conria. It seems like the traveler established a connection to Irminsul. That was a message left by Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul. Perhaps her last memory before she died. As you two probably know, Greater Lord Rukkhadevata disappeared after the disaster in Conria. The timings of these events do line up, so your suspicions are reasonable. A message from Greater Lord Rukkhadevata? We thought it was from King Deshret. King Deshret? That god who died even longer ago? Some present-day desert dwellers still worship him. You probably just heard some of their... A message from Greater Lord Rukkhadevata? We thought it was from King Deshret. King Deshret? That god who died even longer ago? Some present-day desert dwellers still worship him. You probably just heard some of their conspiracies. Okay, so what does the message mean? I still haven't managed to decipher it. Even the Akasha isn't currently capable of doing that. Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul seems to be contaminated with something that has a very dangerous aura to it. Many devoted scholars go mad as soon as they connect their consciousness. I've warned the Academia about this many times, but people still keep falling victim to it. But I believe this is the key to saving Irminsul. That's why I've kept trying to decipher it. So the tree in the vision was Irminsul? Oh, Tainari also said that Irminsul is sick! Is it because of the contaminated consciousness? But even if you can't figure out what that vision was all about, it seems like our search for you was all in vain. The Traveler wasn't affected after coming in contact with that consciousness. I've never seen anyone like that. With you here, we may have a chance at deciphering it. No, we must decipher its secrets. I've already eliminated all other factors that might affect Irminsul. This is the only one left. This puzzle has life and death at stake. It could determine Irminsul's fate, as well as Teyvat's. You mean how the Akasha stops you from having dreams? Yeah, it's been such a long time. No one's noticed something's up? It's not that no one noticed. It's more like no one cared. Ultimately, it's all rooted in the sage's misdirection. Misdirection? The sages convinced everyone to believe that being unable to dream is a sign of rationality and wisdom. Not dreaming is a badge of honor in Sumeru. Even if the truth is that their dreams are being reaped by the Akasha. With their propaganda in place, the sages can maximize their use of the Akasha to facilitate their research. Besides, Greater Lord Rukkhadevata must have created the Akasha in the hopes that it could be used to its full potential. That's why I've never come out strongly against this. Anyway, the perspective advocated by the sages drowned out any voices of doubt. By now,
Even those who never use Akasha terminals find it too shameful and embarrassing to talk about their dreams. To be accurate, I'm using the Akasha as a medium to occupy Catherine's consciousness. How did you do that? Poor Catherine. Does this mean you can also occupy other people's consciousnesses? Theoretically, I can enter anyone's mind as long as they're wearing their Akasha terminal. The Akasha is the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. As Lesser Lord Kusanali and the first Akasha terminal, my consciousness has always been linked to the Akasha. I've always respected my people's free will, so I've never actually occupied their consciousness. When necessary, I just borrow this bionic Snezhnayan puppet. Hold on. Did we just learn some deep, dark secret? So Catherine is... No wonder Paimon felt something was off about her. What about your own body? Why do you need to borrow other people's? Don't you live in the sanctuary of Surasthana? That story begins a long time ago. After Greater Lord Rukkhadevata disappeared, the sages found my newly born self and took me back to Sumeru. At that time, I was young and weak. The sages kept me in the sanctuary of Surasthana, ostensibly for the sake of protecting me. But I've hardly heard from them since. However, I do understand that they had hoped to find Greater Lord Rukkhadevata instead of me, a symbol of her passing. So, the sages basically put their new Archon under house arrest? How dare they! Why don't you teach them a lesson, Nahida? In some ways, they aren't wrong. Greater Lord Rukkhadevata was omniscient and omnipotent. Even after her death, the Akasha is still empowering this nation. And I'm still really far away from being able to call myself the God of Wisdom. Moreover, the Academia is also more proficient at governing this country. My existence has little meaning. Yeah, you got a lot of believers. Just look at the Sub-Zero's festival. Everyone who showed up truly loves you. Thank you for the kind words. But I honestly don't need physical freedom as long as I can connect my consciousness to the Akasha. Trying to find a way to save Irminsul is my life's mission and top priority. I will work on that, and try to live up to being a deity in the meantime. Every once in a while, I will also take up the duties of the God of Wisdom and enlighten a lost soul here and there. Doing all that should be enough. There's never been any big problems with the Academia's governance of Sumeru. This is the first time I've seen them step out of line. I wonder what caused them to go down this path, and what they hope to achieve. Even though the city's residents haven't noticed anything strange, if the Traveler hadn't broken the Sub-Zero samsara, the situation could have become dire. I tried to do some investigating in the Akasha, but I couldn't find anything suspicious. And all the people of interest seem to purposely avoid wearing their Akasha terminals. I think they're deliberately trying to hide something. Oh, that reminds Paimon. In Gandharvaville, there was a sage who had invited Kainari to join some kind of project. Could it be related? Regardless, I need to first investigate the sage's motives, make things right, and punish them if needed. But I'll have to be discreet, or they'll see me coming. Got it! I hope my answers were satisfactory, seekers of knowledge. To be honest, maintaining Dunyarzad's fading dream took a lot of mental energy. I think I may need to rest for a while. Oh, and you don't need to worry too much about the sage's activities for now. The Akasha won't be able to conduct another project on the scale of the Sub-Zero samsara in the immediate future. Go and get some sleep. Leave everything to us. What a relief. This is truly the most exhausting birthday I've ever had.
Traveler? Paimon? Why am I here? Do either of you know? Maybe you were sleepwalking. You know you can't wake up a sleepwalker. We happened to walk by, so we thought we'd wait for you to wake up. I see. Huh. I should visit my maintenance personnel sometime. Oh, I'm fine. I better go. Thank you. We've spent quite some time in Sumeru City, but ever since we last said goodbye to Lesser Lord Kusanali, we haven't heard anything from her. Oh, we can't just keep waiting around like this. Let's go find Catherine and pick up some work so we can at least keep ourselves busy. Ad Astra Abyssosque. We meet again, you two. Hi, Catherine. Do you have any commissions for us today? Commissions, huh? Let me think. Oh, how about this? Please attend the Academia's Academic Symposium this afternoon and recite a love poem on stage. Wait, say what now? And if possible, please also use your camera to capture the reaction of the audience upon finishing the poem. Huh? What kind of commission is that? I see. It appears that you're not interested in this commission. In that case, please go to Port Armos and convince the Aramites there to spend some time volunteering at the local orphanage. Hey, that's not any better. I'm sure the mercenaries will have some interesting reactions as well. Paimon's gotta ask, just who exactly has been submitting these commissions to the Adventurers Guild? Oh, the commissioner? Well, actually, I just wanted to see the two of you in action. Was it so obvious? I was hoping you would actually take one of those commissions. That kind of chance to observe humans doesn't come by often. Ah, so it's Nahida. Paimon just knew Catherine wouldn't crack those kinds of jokes. When did you get into her head? From when she said, Ad Astra Abyssosque. So it's been you this whole time? Are you done resting up, Nahida? Yes. I've been sleeping ever since we parted ways, and I even had a really, really long dream. It was another dream about the Sub-Zero's festival, except it was a happy one. In my dream, I was sitting in the middle of a flower terrace, and everyone in Sumeru City was holding hands as they danced in circles around me. They danced round and round, and everyone looked really happy. I also got to sit on a gigantic flower carriage. Ferris, the Knight of Flowers, raised me really, really high above the ground, and I was throwing an endless amount of Jaldi candies at the children. You know, Nahida, maybe your dream is how the Sub-Zero's festival really should be. It's meant to be a joyous time where everyone gets together to celebrate your birthday.
Nahida. Maybe your dream is how the Sub-Zero's festival really should be. It's meant to be a joyous time where everyone gets together to celebrate your birthday. Huh? Wasn't I describing a really happy dream? Why are you both looking at me like that? Wait, could this be an example of the emotion known as pity? No, we aren't pitying you. That would only make everything worse. We just don't want you to feel too sad. By the way, have you had a chance to visit Dunyarzad? How's she doing? The Homianis haven't allowed any visitors after the festival, so we haven't been able to check on her. Yes, I paid her a visit right after I woke up. She was resting at the time. Her condition is stabilized. However, since Elazar is a manifestation of the withering on the human body, we can only cure it by finding a way to take care of Irminsul's own withering. But for the moment, our top focus should still be figuring out what the sages are up to and what they're planning. Right. Who knows what'll happen if they manage to pull off another scheme like the Samsara of the Sub-Zero's festival? So our first priority should be investigating and putting a stop to the sages' activities. As for how we should pull that off, let's discuss it somewhere else. There are too many adventurers around here. Oh, good point. Sorry, adventurers. We're gonna be borrowing Catherine for a little while. Let's continue our chat here. Okay, so do you have any ideas on how we can investigate the sages, Nahida? Actually, I've already done a little bit of work on that. But for now, I want to hear your thoughts. I've already tried that, but all the key members of the Academia, even the core 30 guards, intentionally avoid wearing their Akasha terminals. It seems that from the very beginning, they've been guarding against info leaks from the Akasha. Of course, it could also be because they're wary of me. Have you already caught the sage's attention? I'm guessing not yet, but distrusting me would make perfect sense if they've ever paid attention to the urban legends about me. In any case, I probably can't take over their minds directly. We're in the dark as of now. Since we still don't know anything about their goals, any rash move could tip them off and lead to terrible consequences. After all, every person in Sumeru City is one of their hostages. No way, that's too risky. You mean it'd be too easy to get caught? No, it's not that. We shouldn't involve innocent students in this. A single mistake could completely ruin their lives. Doing that would be ignoring the safety of my people for my own selfish goals. How is that any different from what the sages are doing? That's a good point. Spoken like the god of Sumeru. Are we really out of ideas? Nahida, you're super smart, so you already have something in mind, right? Don't keep us in suspense. Spill the beans already. According to a popular theory from the Vahumana Darshan of the Academia, rejecting impractical motions at the beginning of a planning session will give more weight to the actual proposal. Okay, but aren't you the god of wisdom? You don't have to use that kind of gimmick to make us take your ideas seriously. Well, I've been thinking that if I can't directly possess the leaders, and if I can't get ordinary people involved, then I should find someone who's already involved, but hasn't decided to side with the sages. You're saying we should recruit a spy? That does sound like it could work. Oh,
Oh, before coming back, we met someone named Alhaitham. He seems like he acts alone, and he likes doing stuff behind the Academia's back. They probably aren't in cahoots. Actually, I already have someone in mind. Do you still remember that female scholar named Setaria? Setaria. Paimon remembers now. Isn't she the one who's always trailing behind the Grand Sage of the Academia? We ran into her basically every time the Sub-Zero's festival repeated itself. You could even say we're old enemies by now. Paimon still remembers the smug and mean way she always spoke to Nilou. Setaria. Paimon remembers now. Isn't she the one who's always trailing behind the Grand Sage of the Academia? We ran into her basically every time the Sub-Zero's festival repeated itself. You could even say we're old enemies by now. I've always liked observing all kinds of people, and Setaria has always stood out from the crowd. She was born in the desert and was hailed as their greatest genius. Her academic gifts allowed her special admission into the Academia, and also gave her the opportunity to serve as the sage's assistant. Oh, Paimon didn't know she was from the desert. She must be pretty special then. Paimon feels like most of the desert dwellers around the city are working as mercenaries. The name Setaria means star. When she lived in the desert, she shone like the brightest star in the night sky. Later on, she was chosen by the sun. The star was given a place in the daytime sky to complement the sun's dazzling light. Soon after, the star witnessed the sun scorching the earth, which brought forth many disasters. The star began to waver. Instead of staying beside such a sun, wouldn't it be better to return and light up part of the night sky? But in the end, she couldn't give up the radiance of daytime. To cope with her shame, the star buried her guilt and closed her eyes. From the sound of it, Setaria's just hung up on the research opportunities here. But she doesn't really support the Academia. She still feels guilty about not doing more for the desert, right? She's just running away from her problems. Indeed. When they are presented with complex moral issues, many people will simply plug their ears and go with the flow until the problem can't be fixed anymore. She's suppressing a lot of guilt, but before she realized it, she had already become the sage's accomplice. She can't deny her part in their schemes anymore. Right. We must somehow make her face her problems again. That way, not only can we get useful intel from her, but she can also use it as an opportunity to redeem herself. From my past observations, Setaria will take a day off from the Academia every 10 days to do some shopping in the city. Tomorrow afternoon just happens to be a shopping day for her. That'll be our chance. To prepare, let's go check out some of her favorite spots, and have a quick chat with a few of the vendors there. This should be Setaria's favorite fortune-telling spot. So should we ask the fortune teller about Setaria? No, I already have enough information on Setaria. The most important thing now is for you to pay attention to the vendor's talking style and key characteristics. Talking style and key characteristics? My poor lost lambs, have you become troubled over your fates? The divine voice of wisdom often echoes between mine ears. If thou be blessed today by the gods, I may be able to show you the way. Huh? Really? Nahida, you've been whispering things to her? Shh! My friend here has some doubts regarding her future. Can we get a fortune reading for her?
Of course, of course. In that case... It would seem that Harut and Marut are quite wary of you. Perhaps, at some time in the past, you have somehow offended the gods. Only mocking the god of Animo, questioning the lord of Geo's financial savviness, and brawling with the god of Electro. Do those count? Oh, nothing. Go on, pick an aspect for her to divine. Health prospects. No problem at all. The gods have spoken. The truth shall be revealed. Your life shall continue on for... many tens of thousands of years? Impossible. Harut, Marut, did you two spoil my divination? I've never read a fortune so absurd. Actually, Paimon thinks this is probably the most accurate fortune-telling you've ever done. I admit that the orientation of today's celestial matrix is, suboptimal. As such, there will be no charge. Is that so? Well, that can't be helped. If you were to bring some food offerings for Harut and Marut on your next visit, perhaps they could help you reverse the wheels of fate. Is this another one of Sataria's favorite stalls? Yep. It belongs to a king. His father helped Sataria a lot when she first moved to Samari City, so she still comes by whenever she has time. When I start talking with him, listen carefully to the details of our conversation. Ah, dear customers. Would you like to look at some pottery? We caught wind of your great craftsmanship, so we specifically came to take a look. Oh, I recognize you. Aren't you Miss Catherine from the Adventurers Guild? Sounds like I'm in for some big business. Speaking of, where did you learn this trade? I suppose you could say it all started with my dad. He's a mason by trade, but I picked up an interest in clay while apprenticing for him. After that, I began making pottery by myself in secret, and I simply changed trades when my works turned out well. Although it's a pity that I'm no longer making much use of the knowledge provided to me by the Akasha. That's nice! You're making a living doing something you love! So is your father still working as a mason? Oh no, not anymore. A few years back, he fell from a roof and broke his leg. Since he had already saved enough Mora over all these years, he's just enjoying the retired life in Port Ormos nowadays. I see. We wish him peace and happiness in his retirement. I'll have someone in charge of logistics at the guild come by another day for some goods. We'll leave you to it. Take care now. No problem. Rest easy, all our goods are sure to meet your every need. This should be our final stop. Sataria's always thinking of this restaurant when she's working at the academia, so she always comes by whenever she's out in the city. Nahida, you've really thought of everything! It's my duty to protect Samari's citizens, after all. Hi there. I feel like I've seen you down by the docks before. Huh? Sorry, I don't quite remember. If I recall, you were having a discussion with someone about shipbuilding at the time. Ah, that's right! I've always been really interested in feats of marine engineering.
After all, I grew up in Liyue Harbor and spent my entire childhood staring at the ships going in and out of the port. I came to Sumeru to study, but failed to make it into the academia due to my lack of talent. But I'm still discussing all kinds of problems with different scholars, and I'm continuing to study and perform research from the restaurant's basement. I'm sure I'll get into the academia after their next round of exams. What an admirable spirit for learning. Amazing! Sure, but you'll find hardworking people wherever you go. So this restaurant has a basement as well? Huh. First I've heard of it. That's right. It's not usually open to patrons. Most of the time, employees use it for breaks or to hold private events. I see. Yes, that makes sense. Well, good luck with your studies, Miss Chishan. Thank you so much. As long as I can make it into the academia as an official student, I'll be happy. So, was that everybody? Mm-hmm. 3 familiar faces should be enough for Sataria. What's the point of all the information we've collected? Nahida, you still haven't told us how you're planning to make Sataria face her problems. Sataria is already used to avoiding her problems, so we must find a way to break through her usual sensibilities. I remember you mentioned that the Aramites in Port Ormuz are all making a fuss about the upcoming resurrection of King Deshret. Although it's all just a boatload of nonsense, the fate of her homeland may turn out to be Sataria's soft spot. Oh, Paimon gets it now! You want to take advantage of the guilt Sataria feels about her homeland. Although she knows she should return home to help the people of the desert, all she's done is conspire with the sages. So, how do we set that up? Well, King Deshret is long gone, and Sataria is also too smart to fall for any simple tricks. If we simply engaged her under the guise of King Deshret's believers, she would definitely be wary of us, and we may not get anywhere. But if we were to borrow some of her close acquaintances to talk with her, her reaction would probably be very different. So, you mean you're going to possess those people we just talked to? Yep. Possess them through the Akasha. Imply they've already converted to the faith of King Deshret, and then convey our made-up will of King Deshret. As long as everything goes smoothly, we'll get through to Sataria for sure. She'll never guess that we had anything to do with it. So that's how you're going to use all the info we collected on these people. It's so that you won't slip up and break form. Possessing them will only work if you can manage to pass off as them. Exactly. So, best of luck with impersonating them. Huh? Best of luck? But we don't know how to possess anyone. That's no problem at all. I'll just share all their senses with you once I've possessed them. As long as you're also wearing an Akasha terminal, the effect will basically be as if you've possessed them yourself. Huh. That is pretty convenient. But why does she have to do this? Can't you do it yourself? Although I've been observing humans for a while, I've never been good at imitating them. You're not wrong. It's always been painfully obvious whenever you try to pass as Catherine. If it was at all possible, I would have preferred to leave these people alone. But seeing how things are now, I probably should just accept it and push on. Yeah, don't beat yourself up over it. We're only doing this to help everyone, and we'll only be borrowing them for a little while anyway. Alright, then let's give it a go tomorrow afternoon.
Here she comes! Sataria's here! Let's quietly follow her. Once she starts talking to her acquaintances, we'll find a safe spot to begin possessing them. As for how we'll sway her to our side, I'll leave that to you. I trust you'll know what to say. Paimon's starting to feel kinda nervous. Okay, looks like they've already started talking. Let's find a hiding spot and get started. That's right. You really can't force anything when it comes to love. And besides, everyone around me has a very different background and outlook. Are you still listening to me, Nabia? Oh, of course I'm listening. You were talking about troubles with your love life, right? I heard everything you said. Okay then. You just seemed a little distracted for a moment there. Strange. Your cats seem pretty worked up. Is something wrong? I always thought they were quiet, happy kitties. Oh, what are their names again? Ah, that's right. They are just little darlings, aren't they? Harut and Marut. So, which fortune do you want me to read for you today? You must have come for another echo of the divine voice of wisdom. I'd like to get another reading on my love prospects, but to be perfectly honest with you, I feel like I've been a real mess recently. A mess? Well, could you do a reading on how long it'll take me to finish my current project at work? I really just want to get it over with. I hear you. No problem at all. The gods will reveal the truth. Sorry, your new laugh is just so hilarious. I couldn't help it. Please pay no mind to those kinds of details. The gods are asking, Setaria, why haven't you gone home? Why haven't I gone home? Do the gods really know everything I've been thinking about? Setaria, why don't you just go home? It's a demand now instead of a question. The gods seem to be truly upset. I'm sorry. I know I failed the gods. Please pass on my most sincere apologies and ask for their divine forgiveness. And if I may ask, Nabia, is there a specific god who's speaking to you right now? What an inconsiderate and naive question. The god who is speaking to me is, of course, the wisest and mightiest of all, King Deshret. King Deshret? No wonder he would make such a demand of me. Wait a second. King Deshret passed away a long time ago. Even though news of King Deshret's resurrection has been spreading like wildfire, it's all just a misinformation campaign from the academia. How can King Deshret still exist in real life? What insolence! I am King Deshret's most loyal believer. Do you wish to refute his voice of wisdom? Oh, no. As a child of the desert, I am only reveling in his power upon learning that his divine glory has touched even this city. I will think very carefully about his demand of me. I'm sorry. I must go now. Wait! Whoa! She just ran off in a hurry. She looked pretty upset, too. Well done. Setaria didn't seem to suspect anything amiss.
To have something she's been trying desperately to avoid show up out of nowhere and berate her, that must have shaken her to the core. Aw, Nahida, it seems like you understand human emotions really well after all. All I know are some abstract Harvard-taught theories. And in any case, my time with you has shown a lot of them to be utterly useless. I'm still trying to make sense of everything. Anyway, enough of that. Let's hurry and catch up to Sataria. She's at Akeem's now, right on cue. Let's get ready to possess him right up. It's okay. I just got caught up in something. Oh, actually, didn't you ask me to help you look for work? What kind of work were you looking for again? Oh, right. Your old man's craft. How could I forget? Speaking of, how's he doing? Is he feeling any better? Oh, that's good to hear. I've been thinking a lot about him. If I could get some more time off, I'd love to pay him a visit. Actually, while we're talking about him, is he still living in Port Ormos? Yeah, he's been retired there for a while. If you could find the time, please write him a letter. Let him know that recently, faith in King Deshret has taken root in Port Ormos and has begun to spread across Sumeru. He has a quick temper and has always been a devout follower of the Dendro Archon. I don't want him to get into a fight with those King Deshret believers because of a difference in beliefs. Oh? So, who are you siding with in all of this? The Academia or King Deshret? I'm so jealous of you. You were born a child of the desert, yet you chose to betray King Deshret, and now you spend all your time with those crooks from the Academia. Akeem, you don't mean... You've also become a believer of King Deshret? What's so strange about becoming a believer of the wise King Deshret? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? Can't pick a side? Me? Whoa! Paimon had no idea you'd be so good at this! You really zeroed in on the issue and put it right in front of her. It might feel a bit overwhelming for Sataria. But once everything is over, I'll be sure to pay her a visit to her mind and explain everything. Anyway, let's keep going. Come on! Sataria's already started talking with she... So, Shishan, have you noticed anything weird in the city lately? Like, as if someone was trying to preach to you about something? Oh, right. Speaking of strange things, I celebrated the Sub-Zerus festival so many times that I lost count. That was really weird. Wait, how could you be aware of that? That should be impossible. Nothing in the report indicated anything like that. Are you still failing to realize that the Academia's lowly tricks could never deceive all of Sumeru's citizens? Shishan, don't tell me that you've converted to King Deshret as well! What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of King Deshret. In reality, shouldn't you be the one who is ashamed? You, who works side by side with the Academia and treated people as nothing more than experimental subjects? Please, please stop! Even now, Sataria's still trying to run from her problems. She can no longer justify everything to herself. Hey, she's trying to talk to the guards! What should we do? This is the most important part of all. Quick, get ready. Mercenary, you're a member of the Corps of 30, correct?
Please help me pass a message to the Matcha right away. The situation in the city is getting out of control. Please, try to remain calm, miss. Tell me what's happening in the city. Heretics are infiltrating the city, and they've already converted many residents to their side. Heretics? What kind of heresy are you talking about? King Deshret! Many people I know have suddenly started believing in him, but he's long dead. It's impossible. Miss Sataria, nothing is impossible. You know my name? King Deshret is immortal, and all who defy him will one day pay the price. You must face the truth, Sataria. You tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the Academia's grasp on you will become, and the deeper you will be ensnared. Child of King Deshret, never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. What's so strange about becoming a believer of the wise King Deshret? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? Bro, 50-50 हार What an गया. absurd question. हार गया हूँ. You make it क्या sound करूँ? like I सेव should करूँ be या ashamed for becoming a I believer mean, of King क्या कर Deshret. सकते हैं? तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या हैं? Sataria, why haven't you gone home? I think सेव करना बेटर रहेगा. It seems that no matter where I run, I only keep finding more believers of King Deshret. I have to say, this is a familiar feeling. I've also been running from my guilt this whole time. Guilt over my part in the sage's plans, and from ignoring the letters from the children of my homeland. But no matter how much I may try to ignore or get rid of it, my guilt always comes back. You won't necessarily lose your research opportunities by facing the truth. Besides, did you really want to conduct your research while carrying such heavy feelings of guilt? How do you know me so well? Are you truly just a believer of King Deshret? Or are you the god himself? That's not important. The important thing is to pass judgment on the Academia and its sages, and to correct their mistakes. If you could provide some assistance in this matter, perhaps it could serve as a form of Bro, atonement. अपन पे 55 pulls कर दिए हैं. I've actually never 15 believed in the pull gods, सेंड्रोने but पे I've टेया always C3 believed हो in गए. serendipity. Your Oh appearance my must be a god. fated opportunity for me to get out of this wretched situation. ओके तो क्या तुम क्या चाहते हो कि मैं किस वे में तुम्हें समझाने की कोशिश करूं? ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ कि पीटी बिल्ड करना काइंड ऑफ एक स्टूपिड कॉन्सेप्ट है, स्पेशली वेपन बैनर पे. क्योंकि अगर तुम वेपन बैनर पे पीटी बिल्ड करोगे, पीटी बिल्ड ज़्यादातर लोग तभी करते हैं जब उनके पास इनफ पुल्स नहीं होते वेपन्स निकालने के लिए या करेक्टर्स निकालने के लिए. सबसे ज़्यादा अगर पीटी बिल्ड करना सेंस बनाता है तो वो एक करेक्टर बैनर पे सेंस बनाता है रादर देन वेपन बैनर पे. क्योंकि अगर तुम वेपन बैनर पे पीटी बनाओगे, तुमको 5 स्टार मिल गया और तुम हार गए, तो फिर तुम गारंटीड नहीं निकाल पाओगे तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे पास इनफ पुल्स नहीं है और प्रोबेबली वेपन बैनर का पीरियड तब तक ओवर हो जाएगा. और अगर ये सोचते हो कि करेक्टर बैनर पे पीटी बिल्ड करना एक सेफर ऑप्शन है, तो स्टिल वो एक सेफर ऑप्शन नहीं है. क्योंकि तुम सोचोगे कि हाँ मुझे नॉर्मली 75 पे या सॉफ्ट पीटी में मिल जाता है करेक्टर, बट फिर कभी कभार क्या होगा कि गेम भी लाइक यू नो आई एम फीलिंग वेरी जेनरस टुडे, और फिर तुमको वो 20-30 पुल में करेक्टर दे देगा जो शायद से तुम्हें नहीं चाहिए होगा. फॉर एग्जांपल, अगर तुमने लोहिन पे पीटी बिल्ड करी ये सोचते हुए कि यार मैं हार गया, या फिर अगर मेरे को करेक्टर नहीं मिला तो मेरी पीटी बिल्ड हो जाएगी और या फिर मेरा गारंटीड हो जाएगी सेंड्रोने. बट अगर तुमको लोहिन मिल गया और तुम्हारे पास लोहिन की टीम नहीं है, देन तुम्हारी पीटी काइंड ऑफ वेस्ट हो गई है. तुमको कैरेक्टर जो चाहिए था वो नहीं मिला, और तुम प्रोबेबली शायद उसकी टीम भी नहीं बना पाओगे अगर तुम्हारे पास उसके कैरेक्टर्स नहीं होंगे. तो यस, कि पीटी बिल्ड करना काइंड ऑफ स्टूपिड कॉन्सेप्ट है, और किसी भी बैनर पे तभी पुल करना सेंस बनाता है जब भी तुम्हारे पास उसके लिए एटलीस्ट एक पीटी पहुंचने का टाइम हो, या फिर एक पीटी पहुंचने का तुम्हारे पास प्रीमोज हो. जैसे कि अगर तुम जस्टिन के सहारे भी जाते हो तो फिर तुम करेक्टर बैनर पे डिसाइड कर सकते हो कि
अभी मैं गारंटीड किसी और के लिए सेव करूं या ये कैरेक्टर के लिए जाऊं? अगर मेरे पास इनफ टाइम है तो मैं स्टोरी करके कैरेक्टर निकाल सकता हूं ऐसे। हाँ, मुझे भी नहीं मिला सिंड्रोनी क्योंकि इंडिया निकल गई। अभी सेम गोल्स कि अगर तुम्हारे पास सिंड्रोनी की टीम है या तो फ्यूचर में उसके लिए कैरेक्टर निकालना चाहते हो तो सेंस बनाता है। बट एनी केस मैं बस ये कह रहा था कि पिटी बिल्ड करना काइंड ऑफ एक स्टूपिड कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात, अगर तुम अभी हार चुके हो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हें सिंड्रोनी अच्छी लगती है और तुम गेम खेल के निकाल सकते हो देन गो फॉर इट। और अगर तुम्हें वो उतनी अच्छी नहीं लगती या फिर तुम गेम खेल कर नहीं निकाल पाओगे उसको, तो मूव ऑन करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मूव ऑन करना फ्रस्ट्रेशन से बेटर रहता है। Please tell me, what can I do for you? How much do you know about the Sage's current activities? I was just one of the designers for the masked dream harvest scheme, which is what happened around the Sub-Zero's festival. But I know very little about the full scope of the overall project. I'd assume that only staff with the highest clearance would have access to those confidential documents. I've just been working to meet the Grand Sage's specified requirements. However, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to the city, and even the sages are still quite wary of him. To fight against the academia, we will need to figure out the nature and the purpose of their work. Is there a way for us to get access to the confidential documents you mentioned? It should be possible if we're willing to take some risks. After all, I'm an assistant to the Grand Sage, and I've been working on many tasks outside of the project. One thing, though, I won't be able to transfer the documents to you through the Akasha once I get my hands on them. The sages have always closely monitored all activities within the Akasha. Let me see. Let's use the most primitive method. Send someone to pick up the documents tomorrow evening at the Academia entrance. The Academia entrance. Wouldn't that be too conspicuous? Don't worry about that. I assure you, this won't be a trap. I'm only suggesting this location because it'll draw more scrutiny for me to leave the Academia again. It'll be safest for me to distract the guards long enough to hand you the documents. ब्रो क्या करूँ, वर्ल्ड में पुल तो इतने हैं कि सिंड्रोने और उसका वेपन को 50-50 हारने के बाद भी निकाल लूँ, लेकिन मन नहीं हो रहा एक्सप्लोर करने का। वही बोला मैंने, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास इनफ विल पावर है कैरेक्टर गेम खेल के निकालने का, देन गो फॉर इट। और अगर नहीं है तो प्रोबेबली मूव ऑन करना बेटर रहेगा। तुम क्या करोगे, सिंड्रोने को पुल करोगे? मैं सिंड्रोने स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टोटल में जितने अकाउंट्स हैं उनमें से मेरे मेन अकाउंट पे सिंड्रोने निकालना सेंस नहीं बनाता, क्योंकि मेरे पास यामिको और चीची नहीं है। और बाकी अकाउंट पे भी सेंस नहीं बनाता क्योंकि यामिको ऑलमोस्ट मेरे किसी भी अकाउंट पे नहीं है। सिंड्रोने का वेपन मेरे लिए सेंस नहीं बनाता क्योंकि वेपन ओनली अकाउंट पे, क्योंकि उसका वेपन सिर्फ और सिर्फ स्टेलर रिएक्शन डैमेज देता है और करंटली सिर्फ वो ही कर सकती है ऐसा, तो अभी के लिए स्किप है। चीची नहीं है, यस चीची नहीं है क्योंकि मेरे पास डेया C1 है, मिजुकी C1 है, टाइनरी C1 है, जीन और मोना शायद से वो भी C1 है, आई डोंट नो। बट मुझे चीची और डी लुक कभी मिले नहीं, तो हाँ वो भी चीज़ है। अभी एक चीज़ हो सकती है, मैं अभी बात ये है कि मैं अपने हार्ड पीटी पे हूँ स्टैंडर्ड बैनर के, ऑफ कोर्स, क्योंकि लिमिटेड बैनर स्टैंडर्ड बैनर डज नॉट रियली केयर। मैं हर बैनर पे ही हार्ड पीटी जाता हूँ हारने के बाद भी। तो देखने की बात है, अगर मुझे स्टैंडर्ड बैनर से अगर थोड़े बहुत पुल करके चीची मिलती है देन मैं सोच सकता हूँ, बट स्टिल इन दैट केस मैं यामिको के बिना निकालना सेंस नहीं समझता सिंड्रोने को करंटली। इवन इफ अगर फ्यूचर में उसके लिए कोई स्पेसिफिक सपोर्ट कैरेक्टर आ भी जाता है तो भी मेरे लिए अभी उसको निकालना सेंस नहीं बना रहा। प्रॉबली मैं उसके रीरन पर उसको निकालने की सोच सकता हूँ अगर तभी मेरे पास उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होंगे तो। ब्रो कितनी बार 50-50 विन है तुम्हारी? ओके, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जितने भी लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं उनके एग्जैक्ट काउंट के स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स हैं, तो
अगर उनमें से मैं डिडक्ट करता हूँ कि 4-5 उसमें से भी मेरे को कुछ 2-3 स्टैंडर्ड बैनर से मिले हैं, क्योंकि ज़्यादातर मुझे स्काईवर्ड सीरीज़ के वेपन मिले थे, तो मैं बोलूँगा कि मैं एवरी 50-50 काइंड ऑफ आ रहा हूँ। और अगर मैं बोलूँगा कि मैं जीता कितनी हूँ, तो स्पेसिफिकली मुझे याद है कि मैं नीलू पे 50-50 जीता था, और उसके साथ एमिली पे जीता था, और उसके बाद शायद से नाविया पे जीता था। तो मैं टोटल में सिर्फ 3 ही 50-50 जीता हूँ अभी तक, और मेरे पास 3 से बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं मेरे अकाउंट पर। 3 से तो ज़्यादा ही है, तो मैं ज़्यादातर अपनी 50-50 आ रहा हूँ, वो भी हार्ड पिटी पे। जीतना और हारना डज नॉट रियली अफेक्ट्स मी, क्योंकि गेम का पार्ट है वो। All right, I trust you. So, if I were to successfully complete this task, would it mean I've atoned for my wrongdoings? That'll depend on the judgment of the Dendro Archon. The Dendro Archon. That's right. Her people are the ones we have endangered. As the god of wisdom, she's also the one responsible for judging and guiding the scholars. Maybe it's time for me to find a god to believe in. Just as Nahida predicted, we've managed to bring Sataria to our side! The Traveler's execution was ingenious. She's the one who deserves all the praise. Well, now that we've made plans to meet again tomorrow evening, all we can do is pray for Sataria's mission to go off without a hitch. Pray? But if we're going to pray to the gods, aren't we just praying to you? God of wisdom and guardian of the scholars? No. The truth is the true guardian of scholars. I've always believed that. Anyway, let's meet again tomorrow evening at the Adventurers Guild. तो उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई, हारना जीतना गेम का पार्ट होता है। मैं बस सजेस्ट कर सकता हूँ तुमको कि अगर तुम ग्राइंड करके नहीं निकाल सकते कैरेक्टर, तो बस मूव ऑन कर सकते हो, और कुछ नहीं। Catherine, we're here! Oh, you are the other Catherine, right? That's right. I suppose I'm the other Catherine in your mind. Shh! We're on a secret mission tonight, so we need to protect Catherine's identity. Yep, Paimon's right. We cannot fully rule out the chance that the meetup tonight is just a trap. If something were to happen, my existence may be the only trump card we'll be able to play. After all, the academia should still be unable to confirm the existence of my consciousness in the outside world. Yep, exactly, just what Paimon was thinking. Anyway, enough about that. Let's just make sure to be on our guard. Off? What do you feel is off? It's the middle of the night. Of course it's quiet. You're not getting paranoid, are you? No, I think she's right. It really is a lot quieter than usual. If you look around, there seems to be fewer people on the streets. I'm not sure if this is the case for the entire city, though. आई थिंक क्या कर सकते हैं उस बारे में। देखो 50-50 हारना सैड है, बट ऐसा नहीं था कि गेम ने तुमको वार्न नहीं किया कि 50-50 हार सकते हो तुम, प्रोबेबिलिटी है तुम्हारी हारने की। इट्स नॉट लाइक कि किसी ने तुमको ऐसा बोला है कि जिस भी
कैरेक्टर के लिए तुम प्री फार्म करोगे, या जो भी कैरेक्टर तुमको बहुत ज़्यादा चाहिए होगा वो तुमको गारंटीड मिल जाएगा, ऐसा कहीं गिवन नहीं है। और एक और चीज़ भी कि किसी ने तुमको एक्चुअली फोर्स नहीं किया ये गेम खेलने के लिए, तो ये गेम तुमको पहले ही बताता है कि ये 50-50 रहता है, गारंटीड निकालना होता है तो तुमको डबल पिटी रखनी पड़ती है जस्ट फॉर द सेफ्टी। तुमको अर्ली मिल सकता है बट नथिंग गारंटीज दैट। मैं समझ सकता हूँ कि हारने से बुरा लगता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो भी गेम का पार्ट है, जीतना हारना भी गेम का पार्ट है, और वो इनएविटेबल है। तुम अभी जीत जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम अभी सिंड्रोने पे जीत जाते तो प्रोबेबली तुम किसी नए कैरेक्टर के लिए जाते और वापस आते तो तुम्हें ये सेम फीलिंग वापस आती। जैसे कि कभी कभार कैरेक्टर अर्ली मिलने से या कभी कभार 50-50 जीतने से खुशी होती है, वैसे हारने से दुख भी होता है, वो इनएविटेबल है। वो हो वैसा नहीं है कि तुम उसको वो कर सकते हो कि मूव ऑन कर सकते, तुम मूव ऑन के अलावा कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ से। अगर तुम्हारे पास कैरेक्टर्स को निकालने के लिए पिटी है और तुम ग्राइंड करने के लिए तैयार हो या फिर टॉप अप करने के लिए तैयार हो या वॉट एवर भी देयर इज़, जो भी चीज़ है तुम्हारे पास ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड है। अभी एज अ फ्री टू प्ले, क्योंकि मैं फ्री टू प्ले हूँ, ज़्यादातर लोग नहीं होते, ज़्यादातर लोग बल्कि या कुछ ना कुछ माइक्रो ट्रांजेक्शन्स पाए करते हैं। फ्री टू प्ले के लिए वो जो सर्कल है वो और ज़्यादा टाइट होता है, क्योंकि फ्री टू प्लेयर्स के लिए और भी कम रिसोर्सेज रहते हैं गेम के अंदर। ओके, देन यू कैन नॉट रियली कंप्लेन ब्रदर कि अगर तुमको 15 पुल में 5 स्टार कैरेक्टर मिल गया और तुमको कैप्चरिंग रेडियंस ट्रिगर हुआ, तुमको ऑलरेडी गेम ने थोड़ा बहुत ही सही, आई थिंक ज़्यादातर लोग ऐसा ऑफेंड हो जाते हैं कि अरे मैं एक बार ही तो लकी वाला है, मैंने तुमको गेम ने लकी किया तो इसका मतलब ये नहीं कि गेम तुम्हारा लक कंसिस्टेंटली 100% पर रखेगा, वो तो मैं लकी भी कर सकता है। एज आई सेड बिफोर कि जीतना और हारना गेम का पार्ट होता है, उससे क्या कहते हैं, ऐसा होने पे डिप्रेस होने से अच्छा है कि वो चीज़ को एक्चुअली एंटिसिपेट करना नहीं चाहिए। अगर तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस लो रखोगे गेम से तो तुम डिसअपॉइंट कम होगे। Huh. Maybe it's just a coincidence. Maybe Sataria figured out a way to not only distract the guards, but also to get everyone to go to sleep early, just so we can exchange the documents in peace. I also can't quite figure out why things feel a little off. But now that we're here, let's go ahead and meet her as we planned. Well, regardless, as long as you're here with us, Paimon feels a little safer. I smell rabbit. मैं बस बोलूँगा उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दो, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। गाचा तुम ये गेम के अंदर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसको ज़्यादा थॉट मत दो। Managed to distract all the guards. समटाइम्स ऐसा होता है कि भाई ऐसा है, पर इसके बारे में क्या कर सकते हैं, बस वो माइंड सेट रख के बस मूव ऑन करना होता है। What are all these people doing here at this hour of the night? Ah, the triumphant hero returns at last. And to a rather spectacular welcome, even if I do say so myself. You're the outcast, expelled from the academia. Indeed I am. Although these days they tend to call me the Doctor.
If you're looking for your researcher friend, she has already been taken into confinement. With some basic caution, she could have discovered the listening device on her person. Clearly, she lacks the degree of rigor expected of a true scholar. The people of Sumeru City! What have you done to them? I simply made some minor adjustments to their Akasha terminals. Now they can deposit information directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is a hero who has just saved the world. My experiment is a success. And now it seems they can no longer hold back their sheer adoration. No, what should we do? These are all just regular people. Leave now. You need to get out of here. But that guy's a Fatui Harbinger. We can't just leave you here. Nor can I abandon the people of Sumeru. वेलकम बैक Don't कविता, worry. क्या हाल है? We'll meet again outside of the city. I see. You appear to have overridden their mental faculties with your own consciousness. To possess such a powerful mind, you must be the god of wisdom. Nice. This should be far enough. Paimon needs to catch her breath first. Is the Hida going to be okay? We only made it out because of her. Paimon wasn't counting on running into a new Harbinger here, let alone such a high-ranking one. That guy was number 2. So scary. He called himself the Doctor. Remember, Tainari told us about him. Sataria did say that someone who once got expelled from the Academia came back recently. And that even the sages are wary of him. किसके लिए? Yep. Sounds like she must have been talking about the Doctor. क्योंकि एक वेपन तो रिथॉसली का है, दूसरा वेपन यामिको का है, तो किस वेपन की बात कर रहे हो तुम? You know who I'm talking about. Okay. Let's see. How many more? Nope. आई थिंक कि हाँ, कागुरा वेराइटी से बेटर होना तो चाहिए कैश फ्लो। मैं सिर्फ उसका पैसे पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग वेपन मेन्यू में जाकर पढ़ सकते हो उसके पैसे। ओके, तो जो कैश फ्लो का पैसे है वो अटैक इंक्रीज करता है जब भी एचपी इंक्रीज और डिक्रीज होती है, और तुम्हारा नॉर्मल अटैक और चार्ज अटैक का डैमेज भी इंक्रीज करता है, जैसे कि निंगवांग अपना नॉर्मल और चार्ज अटैक करती ही है नॉर्मली। तो यस, हाँ ये बेटर है, बट वो एचपी इन्फ्लक्स के लिए तुमको कोई करेक्टर लेके जाना पड़ेगा जिससे निंगवांग की एचपी इंक्रीज या डिक्रीज हो, बिकॉज रितोसली तो कर सकता है बट निंगवांग के लिए वो करना मुश्किल है। निंगवांग के लिए या तो तुमको फुरीना चलानी पड़ेगी निंगवांग के साथ में, या फिर कोई वे होना चाहिए उसको उसकी एचपी इंक्रीज डिक्रीज करने का, वरना उसका पैसे उसको नहीं मिलेगा। कितने स्टैक मिल सकते हैं यहाँ पे?
चार स्टैक नहीं है, नॉर्मल अटैक 3 स्टैक मिलते हैं, तो 16 टाइम्स 3 36 अटैक इंक्रीज मिलता है। साथ में नॉर्मल चार्ज अटैक भी 36% मिल जाएगा। और आई थिंक ये अचीव करना काइंड ऑफ ईजियर है। वो डैमेज खुद ही इतना लेती है, हो जाएगी, हील हो जाएगी। आई मीन बट वो प्रैक्टिकल नहीं है ना, तुमको एक कंसिस्टेंट वे चाहिए वो स्टैक्स निकालने के, क्योंकि वो जो स्टैक्स हैं ना वो ज़्यादा देर के लिए रहते भी नहीं है, वो 4 सेकंड के लिए रहते हैं। तो वो ईच 4 सेकंड में रिप्लेनिश होने चाहिए, क्योंकि वो इफेक्ट ट्रिगर हो सकता है एवरी 0.3 सेकंड में। उसके लिए फुरीना चाहिए, नहीं उसके लिए फुरीना और हीलर भी चाहिए, क्योंकि हील भी होनी चाहिए। सिर्फ डिक्रीज होती रहेगी तो अगर 50% एचपी पे पहुंचने के बाद में, आई थिंक वो ऑन फील्डर है, तो अगर तुम फुरीना के साथ में कोई ऑन फील्ड हीलर भी चलाओगे जो ऑन फील्डर को हील कर सके, तो फिर वो ईजियर रहेगा उसके लिए। जैसे कि तुम फुरीना का अल्ट वो क्या कहते हैं ई करते हो, अल्ट करते हो, उसका बफ मिल जाएगा तुमको। उसका ई जो है तुम्हारी एचपी कंज्यूम करेगा, बट वो तुम्हारी एचपी एक सर्टेन लेवल तक ही कंज्यूम करता है, तुम्हारी एचपी 50% पहुंचने तक, और वो पूरी टीम की कंज्यूम करता है। बट तुम्हें समहाउ फुरीना को स्क्वीज इन करना पड़ेगा उसके निंगवांग की स्कीम में। अगर जीलोलिन निकाल, तुम्हारे पास जीलोलिन है क्या? तुम्हारे पास अगर जीलोलिन है तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम काइंड ऑफ सॉल्व हो सकती है, क्योंकि निंगवांग जीलोलिन और बाकी के 2 करेक्टर्स तुम्हें 2 डिफरेंट एलिमेंट लिखाने पड़ेंगे। ओके, तो जीलोलिन की हीलिंग नहीं ले सकते फिर तुम। और कौन हील करता है निंगवांग के लिए? लोग ज़्यादातर फुरीना को चलाना प्रेफर भी नहीं करते उसके साथ। और अगर तुम निंगवांग को फुरीना के साथ चला रहे हो तो तुम शायद से उसमें मारा चासी भी यूज़ कर सकते हो उसका एक रेट फर्दर इंक्रीज करने के लिए। बट फिर तुमको उसको लूनार टीम में स्क्वीज इन करना है, तो फिर तुम उसको वो लूनार वाला आर्टिफैक्ट सेट यूज़ करना पड़ेगा। आई थिंक जलान को रिप्लेस कर देगी यहाँ पे। आई डोंट नो, बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। और वैसे भी साइकिल फुरीना के साथ एक और प्रॉब्लम रहती है, फुरीना को तुम्हें जिस भी टीम में डालना है तुम्हें साइकिल उसके कूल डाउन के हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि फुरीना का कूल डाउन सबसे लंबा होता है 20 सेकंड का। बट ये है कि उसका बफ भी बहुत देर लास्ट करता है, तो तुम्हारे लिए साइकिल्स करनी थोड़ी ऑकवर्ड हो सकती है उसके लिए, क्योंकि उसका स्किल का कूल डाउन कुछ 12-13 सेकंड का होता है, बट उसका बस्ट का और उसके क्या कहते हैं बफ का कूल डाउन 20 सेकंड का रहता है। तुम्हारे पास अभी तो तुमने बताया कि तुम्हारे पास जीलोलिन नहीं है, तो ये टीम कैसे बनाओगे तुम? ऑफ कोर्स ये टीम चल सकती है, बट मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि अरे हाँ, ओह नो, बट तुम मिस आउट कर चुके हो। तुम यहाँ पे कोलम्बीना कोलम्बीना फुरीना निंगवांग और क्या नाम था उसका, लिनिया चला सकते हो अगर तुम्हारे पास लिनिया होती तो, क्योंकि लिनिया हील भी करती, तो तुम्हारा वो एचपी फ्लक्स भी मैनेज हो जाता इजीली। बट ये सब तब है जब भी तुम रिथॉसली का वेपन निकालोगे तो, क्योंकि एक और चीज़ भी है, तुम चाहिए तो रिथॉसली का वेपन स्किप ही कर सकते हो, क्योंकि वो उसका उतना अच्छा उसके क्या कहते हैं उसके लिए वो उतना प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर है भी नहीं वो वेपन। उसके लिए प्रॉबली अभी भी सिर्फ 2 ही वेपन सबसे बेटर है, वो है कि लॉस्ट प्रेयर ऑफ सीक्रेट विंड्स और स्काईवर्ड एटलस। अगर कभी क्ली आती है वापस तो तुम जैसे कि क्या नाम है उस चीज़ का, क्रॉनिकल्स वगैरह में अगर कभी क्ली वापस आती है तो तुम लॉस्ट प्लेयर निकाल सकते हो निंगवांग के लिए, क्योंकि वो उसका बेस्ट वेपन है। या फिर कभी ना कभी 50-50 हार के या फिर स्टैंडर्ड बैनर से निकाल सकते हो लॉस्ट प्लेयर। बस गारंटीड वे थोड़े से कम है लॉस्ट प्लेयर निकालने के। और स्काईवर्ड एटलस मैं बोलूँगा स्किप करना ही बेटर रहेगा। स्काईवर्ड अगर कभी मिलता है एटलस तो उसे यूज़ कर लेना, और अगर लॉस्ट प्लेयर मिल जाता है तो देन उसका बेस्ट इन स्लॉट है वो। आई डोंट थिंक सो कि निंगवांग को
कोई स्पेसिफिक वेपन उतना अच्छा चलेगा उस पर जितना वो चलेगा, बट स्टिल निंगवांग इज निंगवांग ब्रो। तुमको निंगवांग पे बिल्ड करने के बाद में मैं ये बोलूँगा कि ये पॉइंट पे उसके लिए तुम सोलर पर्ल निकाल लोगे तो बेटर है, वो एक बैटल पास वेपन है, तुम्हारी लाइफ फार इजियर हो जाएगी उसको निकाल लोगे तो, क्योंकि तुम्हारा क्या हुआ, नॉर्मल अटैक हिट इंक्रीज एलिमेंटल स्किल बस डैमेज विल बी इंक्रीज बाय 20%। जब भी नॉर्मल अटैक से हिट करोगे तुम्हारा बस डैमेज 20% इंक्रीज हो जाएगा। लाइक वाइज जब ये एलिमेंटल वही वाइस वर्सा होता है कि तुम एलिमेंटल स्किल हिट करते हो तो तुम्हारा नॉर्मल अटैक का डैमेज इंक्रीज होता है। तो तुम्हें 20% यहाँ से एलिमेंटल बस डैमेज मिल रहा है, और रिफाइनमेंट 5 पे, इसका मतलब कि R5 पे तुमको 40% मिल जाता है वो चीज़। उसका ड्यूरेशन सेम रहता है पर 6 सेकंड के लिए, बट इसका अप टाइम काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि तुम नॉर्मल अटैक करते ही रहते हैं नॉर्मली, तो उसका अप टाइम होना चाहिए। आई डोंट नो कि उसके ऊपर ICD कितना है। मैं बोलूँगा ये पॉइंट पे अगर तुम अपनी लाइफ की सब चीज़ निंगवांग के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार ही हो तो एक बैटल पास उसके लिए बाय कर लो फिर। Yeah, now that the doctor's in the picture, we're no longer just dealing with the academia. They're in cahoots with the Fatui. But what are the Fatui after this time? Another Gnosis? Yeah, things would be a lot easier with Nahida's help. Nahida said we'll meet again outside of the city. But we can't just keep waiting around, right? You mean... Oh, right! Wasn't he invited by the sages to work on some project when we were staying with him in the Vidya forest? That has to be the same project! Even though he turned it down at the time, he might still know something. There's no time to lose. Let's go to Gandharvaville! सिंड्रोनी कैसी लगी? सिंड्रोनी काफ़ी अच्छी लगी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उसके लिए कोई टीम नहीं है, तो मेरा निकालना वर्थ इट ही नहीं है उसका। प्रॉब्ली शायद अपनी गारंटी, क्या नाम था उसका, नॉय था, जो भी नाम है वो जो क्रिम्जन रेड हेयर एल्फ है, उसके लिए सेव करूँगा अपना गारंटी जो है। उसके अलावा कोई कैरेक्टर उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। Hold it right ये there. नॉय A blonde-haired traveler and a floating fairy. We've got you all right. Take a look around. You've fallen right into our trap. Are you mercenaries from the Corps of 30? Did you come here to arrest us? Corps of 30? We're nothing like those government lapdogs who don't even get scraps for their work. We are an elite brigade that commands the highest commission rate in all of Sumeru. We're here on the orders of a client known only as the Outcast. The Outcast? An outcast from the academia? चांसेस हैं कि वो एक्चुअली मेटा ब्रेक कर दे आके, चांसेस हैं। ज़्यादातर ऐसे ही कैरेक्टर्स होते हैं जो मेटा ब्रेक कर देते हैं। लास्ट टाइम उसने किया था, क्या नाम है उसका, न्यूलेट ने किया था ऐसा। और ज़्यादातर उनका इंट्रोडक्शन इतना ही होता है, छोटा सा ही। उसका भी इंट्रोडक्शन बहुत छोटा था, उसका डिज़ाइन भी अच्छा है। और अगर तुमने HSR खेला है तो फिर अर्जेंटीसस का काफ़ी रिजेंबल करता है डिज़ाइन, तो वो अच्छा भी लगेगा लोगों को। But why wouldn't the doctor just send the Fatui after us? Still wasting time on idle chit-chat. We'll shut you up soon enough. Get them! You're up, traveler! ये मर्सिनरीज एक्चुअली सोच रहे थे कि ये ट्रैवलर को मतलब Out of the frying pan, it's... ठीक है भाई। Take that!
एक तो इतने awkward जगह पे क्यों फाइट हो I रही taste है? blood. Let's light it up! Nice and spicy! Come on! We can do it! Teamwork is dream! Hey-ya! Let's light it up! Boba, get them! ये कहाँ से लग रहा है? ओह ये यहाँ पे है। It isn't over yet! Here comes reinforcements! इसे टाइम वेस्ट करने के लिए हैं क्या ये लोग? I'm going in! You're toast! That was pretty rough. HSR स्टोरी बेकार है। Elite Oh my mercenaries god are भाई। like? तुमने उसकी स्टोरी पढ़ी भी है क्या एक्चुअली? अगर तुमने उसकी स्टोरी पढ़ी होती या एम्फोरियस तक स्टोरी करी होती तो शायद ये चीज़ ना बोलते तुम। HSR की जो HSR की स्टोरी बहुत अच्छी है। Yeah. Looks And like I we'll think have to किसी keep से our गेम की guards स्टोरी up. बेकार बोलना काइंड ऑफ स्टूपिड स्टेटमेंट है। But this doctor guy seems like a pretty tough opponent. He knew exactly where to set up an ambush. Did he predict that we would try to find Tainari? Going up against smart people is tough. Anyway. जब ये एम्फोरियस की स्टोरी तुम कर लो तब बताना। एनीवेज, और रही बात जैंगलिंग के ER इश्यूज़ की, अभी अकाउंट उस फेज़ में चल रहा है जब भी उसको आर्टिफैक्ट्स की ज़रूरत है, और बिना आर्टिफैक्ट्स के ER प्रॉब्लम्स फिक्स करना नामुमकिन होती हैं। टेक्नारी तो ये रहा, नहीं ये नहीं है टेक्नारी। Oh, it's the Traveler and Paimon. What are you two doing back here? Kale, it's nice to see you again. Are you doing all right? To be honest, I'm not doing too well. My Elazar has been progressing at a faster rate lately. I'm finding it harder to complete more intricate tasks. As a result, Master Tainari is taking me off the patrol schedule. He will only allow me to stay here and coordinate other people's tasks. Oh, Kale. Speaking of Tainari, did he go off on patrol? We're here to talk to him. Oh, Master Tainari? He just left the Avidia Forest a little while ago. He was headed to Party's DI. Huh? He left? What? Isn't Tainari always saying that he never wants to leave the Avidia Forest? He even turned down the Sage's invitation. I thought it was weird too. Master Tainari always prioritizes his work as a forest watcher above everything. He almost never leaves his post. He left in a hurry this time though. No, I only found out that he left through a message he left behind. He also made sure to delegate all his tasks using a schedule. To leave in such a hurry? I'd guess he had something urgent to take care of. Master Tainari originally studied in the Amorta Darshan of the Academia, and Partis Di is something like the Amorta's research base. Many rare shrubs and grasses have been planted there for research. I know that before he became a forest watcher, Master Tainari once spent a long time conducting research at Partis Di. A research base, huh? Gotta wonder what kind of research Tainari just decided to work on all of a sudden. Oh, we don't have a lot of time, so let's go look for him at Party's DI. Don't worry. I'm fine. I'm used to living with Elazar by now.
If you run into Master Tainari, please send him my regards. Got it. Will do. या नया एरिया अनलॉक करना पड़ेगा। आई थिंक अभी थोड़ी देर बैठ के मैं टेलीपोर्ट वे पॉइंट से अनलॉक करता हूँ। यहाँ से रहेगा जाना। Terrified of Corley means Corley बस एक मिड कैरेक्टर है और उसको लोग यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि लोगों के पास डेंड्रो ट्रैवलर का एक्सेस है। तो डेंड्रो ट्रैवलर के होते हुए लोग कॉर्ली क्यों यूज़ करेंगे? बेस्ट केस सिनेरियो में लोग उसको सिर्फ ट्रैवलर को बैटरी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ क्या चालू करी मैंने? ये क्या चालू कर दिया? Anyways. Good luck with that way. That was not welcome here. मिज़ुकी और चीची लेकिन वो कैरेक्टर्स क्यों है तुम्हारी लिस्ट में? आई डोंट थिंक सो। चीची का सीवन अच्छा है। क्या है चीची का सीवन? When the Herald Frost hit an opponent marked with fortune preserving talisman, Chi-Chi's regenerate 2 HP, 2 energy. बकवास भाई। Chi-Chi's normal and charge attack damage affected by increase, ये बेकार है।
has their attack वो भाई माय गॉड उसके सारे कॉन्स्टलेशन इतने खराब क्यों हैं? रिवाइव ऑल फॉलन टीम ना है किसी किसी कॉन्स्टलेशन पे अच्छी नहीं है वो। आई थिंक उसका ये डिसेंट है कि तुम जिस भी एनिमी को अटैक करो उसका डैमेज डिक्रीज कर सकते हो बस। बाकी आई डोंट नो। चीची का चार्ज अटैक नॉर्मल अटैक इंक्रीज होगा यहाँ पे कॉन्स्टलेशन 2 पे। सारे कॉन्स्टलेशंस बेकार है चीची के। मिजुकी किधर गई? Okay, it's a big one. Okay, when Yume Mizuki is in the Dream Drifter state, she will continuously apply the 23 nights awaiting effect to the nearby opponent for 3 seconds every 3.5 seconds. So every 0.5 second के बाद उसका टाइम आएगा. When an opponent is affected by anemo damage triggered when an opponent affected by anemo damage triggered swirl reaction. While the aforementioned effect is active, the effect will be cancelled and the swirl instance has its damage against opponent increased by 1000% of Mizuki Elementary Mastery. I think but swirl का खुद को मल्टीप्लायर कितना होता है? आई थिंक उसका डैमेज इंक्रीज हो रहा है जैसे कि वो सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एनिमे का डैमेज इंक्रीज कर रहा है। एनिमे बोल रहा हूँ, एनिमोस वर्ल्ड का डैमेज इंक्रीज कर रहा है उसका। तो दोनों कैरेक्टर्स में से भी देखा जाए तो मिजुकी कॉन्स्टलेशन 1 वर्थ इट है। कॉन्स्टलेशन 2 व्हेन मिजुकी एंटर्स द ड्रीम ड्रिफ्टर स्टेट every elementary mastery point she has will increase all nearby party members reaction damage by 0.4. आई थिंक मिजुकी का कॉन्स्टलेशन 2 सबसे अच्छा है। कॉन्स्टलेशन 2 मिजुकी काफ़ी अच्छी है, लिटरली तुमको वो एलिमेंटल डैमेज बोनस दे रही है। तो ये वाला बेटर है, बट मिजुकी का C1 बेटर है चीची से। चीची के सारे कॉन्स्टलेशन बकवास है। आई थिंक जो ओनली डिसेंट आर्टी उसका वो है कॉन्स्टलेशन है, वो उसका C2 है जिसमें उसका क्या कहते हैं चार्ज अटैक और नॉर्मल अटैक डैमेज इंक्रीज करता है फॉर DPS चीची। अगर तुम DPS चीची चला रहे हो तो उसके स्किल से कुछ मैटर नहीं करता उसके कॉन्स्टलेशन का। और उसके कॉन्स्टलेशन 4 प्रोबेबली बेटर होगा कि एनिमी का डैमेज डिक्रीज करने के लिए। उसकी पूरी किट ही बस डिज़ाइंड है कि तुमको कम डैमेज हो और तुम जल्दी हील हो। एक उसको स्टेला बफ देके उसको ऐसा मेटा कैरेक्टर नहीं बनाए रख सकते लंबे टाइम के लिए। बात करो घंटा में से उसमें से कुछ नहीं मिल रहा, इससे कॉन्स्टलेशन मिल रहा है। Are you sure? Complete is to obtain witches revolution case. Revolution obtained from this case can be used to unlock the corresponding character additional talents and characters enchantment. इससे कुछ करेक्टर नहीं मिलने वाला भाई, इससे कोई करेक्टर कॉन्स्टलेशन नहीं मिलने वाला। जब अगर करेक्टर ऑलरेडी हो तो कॉन्स मिल रहे हैं? नहीं, किसने बोला कॉन्स्टलेशंस मिल रहे हैं भाई? यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी तुम करोगे उससे टू एनहेंस द फॉलोइंग कैरेक्टर टू एनहेंस। वो कॉन्स्टलेशन नहीं दे रहे भाई, ऐसे कॉन्स्टलेशन नहीं बांट सकते वो। लेट्स सी कौन से हैं यहाँ पर वैसे लिस्ट में 5 स्टार्स के अलावा। यहाँ पे बेडो है और डायोना है। बेडो डायोना नहीं है मेरे पास, मैं चेक कर सकता है यहाँ पे। इसका सेंशन एडिशनल टैलेंट है।
नहीं भाई, फ्री में कॉन्सलेशन क्यों देंगे वो लोग? और अगर ये कॉन्सलेशन होता ना भाई, अब तक तो कम्युनिटी अपने कपड़े फाड़ देती। कॉन्सलेशन नहीं है ये काइंड ऑफ बफ है बस। अब लिखा हुआ है कंप्लीट द रेवोल्यूशन ऑफ चांस टू ऑब्टेन विच इज रेवोल्यूशन केस। Revelation obtained from this case can be used to unlock the corresponding character's additional talent and character's enchantments. ना ही वो टैलेंट्स हैं, ना ही वो enchantments हैं, वो constellations हैं। constellation एक डिफरेंट चीज़ होती है, वैसे रैंडम थोड़ी ना बांटेंगे। स्टेलर बफ, हाँ मान सकते हैं। वो वही चीज़ है जैसे ये जो थी ना, ये जो थी ये विच इज़ होमवर्क, ये वाली, ये स्टेलर बफ कुछ मिला होगा उनको, आई डोंट नो। उनके किट में डायरेक्टली नहीं है वो चीज़ वैसे, बट वो कॉन्सलेशन नहीं है, इतना मुझे पक्का यकीन है। वैसे फ्री में कॉन्सलेशन नहीं बांटेंगे भाई, इतना जेनरस नहीं है म्यू यहाँ। प्रोबेबली शायद से वो विच इज़ होमवर्क की तरह तुमको कोई 4 स्टार सेलेक्ट करने के लिए देंगे, बट पता नहीं, उस वो लिखा नहीं है उसके बारे में तो कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। प्रोबेबली नहीं देंगे वो लोग। मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखा, वो बोलने डायलेक्ट ईजिली फास्ट स्किप हो जाएगा। मैं स्किप कर नहीं रहा, जो लोग स्किप कर रहे होंगे प्रोबेबली बता पाएंगे। आई थिंक यहाँ पे हम उससे मिलेंगे, स्क्वायर मूव से। कैथरीन, Thank goodness you're okay. We were so worried about you. Hey, this was supposed to be a touching reunion, but you're ruining the moment. Actually, it's very smart of the traveler to be wary of me right now. After all, the doctor has shown that his technology can apparently even control human minds. Plus, it's not like you could have known what happened after we split up and I was facing the doctor by myself. Even a pool of stagnant water after a torrential storm can occasionally pass as a patch of sky. Paimon feels like only the real Nahida could come up with such an obscure analogy. वेडनेसडे है ना ये? आज केस के वीकली रिसेट होंगे। Huh? But I wasn't trying to win your trust or anything. All I wanted was to clarify my point. Well, we understand that point now. Please, Nahida, tell us more about what happened. Are those poor people all right? When you left, I was still in the middle of restoring everyone's minds.
Thankfully, when the doctor mentioned depositing information into the subconscious, he didn't mean engraving information into their minds. Instead, he did something closer to creating hallucinations. That was still within my power to fix. Luckily, I managed to finish my restorations and mind jump away from him just as he was about to capture me. Whew. What a relief. The doctor sure pulled out some hidden cards, but good thing we had Nahida with us. I wouldn't be relieved just yet. I gave away my true identity when I restored everyone's minds, which means we've lost another one of our trump cards. Also, the doctor is already an expert at modifying Akasha terminals. Maybe it's only a matter of time until he captures my consciousness inside the Akasha. Would that mean you'd no longer be able to jump between minds? Then how do we stop him? He's still... Ugh. It feels like he's toying with us. What a nasty piece of work. Plus, the doctor's combat ability alone is apparently enough to make him worthy of being number 2 of the Fatui. We shouldn't give up hope just yet. Let's try to find another way to attack this problem. Actually, Nahida, how did you know we were trying to get to Party's DI? Have you been waiting for us? Yes, I have. I can see the traveler's elemental energy, so I deduced your destination by looking at the direction you were moving in. You didn't come here for sightseeing, right? Did you find any leads? We're looking for a scholar we know. His name is Tainari, and the sages once tried to reach out to him. Why don't you come inside with us and see what we can find? I like how कि Genshin का server वो चीज़ hold कर पा रहा है. I mean ping suddenly high नहीं हुई है किसी की. I think उन्होंने उस चीज़ के लिए वो किया था. Prepare करके रखा था कि हाँ players आएंगे बहुत सारे pull करने के लिए. Traveler? It is you! RPC है यहाँ पे क्या करते हैं? It's Hypatia! Long time no see. Ah, what a pleasant surprise! It's so nice to see the two of you again. Who's this? She's a scholar we met in the Avidia Forest. When we last saw each other, she was still training in the... what's it called? Satyavada life? Oh, I see. That's right, we're old friends. अच्छा ये जो animation perform हुई ना उसके लिए wait नहीं करना पड़ेगा click करने के लिए वो चीज़ है. Hardly anyone has even talked to me. Hypatia, you're way too excited about this. Actually, for you to leave the Avidia Forest means... you're not in training anymore? Wait, no. Did you already finish your training and reach Pariporna life? What do you think? My consciousness has already managed to make contact with the divine. You did it! Congratulations! It's so exhilarating to share this sublime joy with others at long last. When my consciousness made contact with the gods. वो लोग नहीं डाल सकते skip button. Unparalleled experience that was. That sounds incredible! Oh, all right. Actually, please wait. I haven't forgotten my promise to you. Remember? I promised to help you understand what you saw from Irminsul once I gained deeper insights. My current self has not only gained true insight, but I can even help you establish a direct connection to the consciousness of the divine. You can do that? I've never heard of anything like that, but if you want to give it a try, I'll do my best to protect your consciousness during the process. Hold on. I brought some spirit borneal with me. This is still a crucial part of the ceremony. We're using that incense again? All right now. Hold my hand. I'll help you establish a pathway to connect your consciousness. I think इसने इसका मुझसे बात करी.
Ready? It took 3 betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of lies. My fury will never be quelled. The first to betray me was a god. My creator. My mother. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. The second was a human. My family. My friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. The third was one exactly like me. A hope for the future. A fledgling barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted. And the gods fill me with pure loathing. So I said good riddance. I denounce the world and laugh in its face. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. There is no need to fear. The pain will be brief. Your era is coming to an end. ये क्या रिएक्शन है? इंस्टेंट चेंज हुआ उसका रिएक्शन. It's neither the great Lord consciousness nor King Dashrath. Did we actually just see the Balladeer's memories? Everything matches what we know about him. But how is he connected to the divine consciousness that Hypatia was talking about? You saw it, right? You felt it, right? Such a majestic god! Such a noble will! Such sublime emotion! Alas, shame. If only that which beats within my chest wasn't a filthy mortal heart. Oh, great and merciful God, please grant me forgiveness and salvation. Do you understand now? I'm afraid this is no Puripurna life, but rather... You! Why are you so mean to me? Why is everyone hiding from me? I found divine wisdom. Shouldn't I receive praise and honor? Haven't I uncovered that light in the darkness? Hypatia? That's how I always thought everything should be. Wait, have I already lost my mind? Wait, something isn't right.
तैयारी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? Okay, we finally lost him. Are you okay, Nahida? Wait, no. Something feels different. You're back! Oh, the Traveler's back? Nahida was controlling your body for a while. It seemed like she jumped over to you as an emergency measure right before the Catherine puppet was destroyed. After that, Tainari heard the commotion and came over. He helped us defeat the mercenaries and then he ran with us all the way here. What? You swapped places? You mean your consciousness also went into Nahida's body? Wait, then where is Nahida's consciousness? Where is she now? I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. Had I not seen it with my own eyes, I would have never believed it. I don't think this can be achieved with current human technology. Also, while we were running, the consciousness in your body told me to pass on a message. She said, "The doctor has found a way to trap my consciousness, so I can't journey with you anymore. But even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies." Oh no! Nahida's trapped in the sanctuary of Surasthana for good this time. Was that message all she left for us? It's pretty vague. Oh, that makes sense. Since the doctor captured her, she won't be able to say anything without him knowing. She's being extra careful. Even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. Huh. Paimon knows the moon illusions and lies are from the alchemical divination at the Sub-Zero's festival. Didn't Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria. Oh, that makes a lot of sense. Huh. Do you think Nahida was telling us to go find help in the desert? But she isn't with us anymore. Think we'll be okay? Paimon, you said Sanctuary of Surasthana, correct? Does this mean that this Nahida you're talking about, the consciousness who was occupying the Traveler's body, is the Dendro Archon? Your guess is correct, but the situation's a bit complicated, so it's really hard for us to explain right now. That's all right. A scholar's curiosity doesn't need to be appeased right away. As for the complicated nature of the situation, safe to say I have witnessed that for myself. I've spent some time with you, and it looks like the Dendro Archon's also on your side. So, I trust you. Thank you, Tainari. Oh, actually, we came here to ask you a question. What do you know about the project that the sages have been working on? Ah, that. While I was indeed invited to join that project, the sages were always secretive about its scope and goals, so I eventually declined. All I know is that the project has something to do with the restoration of Irminsul. Huh? Did you see something when you were in Nahida's body? Academia is turning Validier into a god. What? Do you have any evidence? I saw a nascent god under construction. Nascent god. Apatia also shows us a so-called divine consciousness. So that's what happened. That explains why Hypatia's symptoms were different from those of the other scholars who went mad. It's because she made contact with the consciousness of a new god who is still in the process of being born. Tainari, did you leave the Avidia Forest because of Hello Hypatia? Papu, क्या हाल है? क्या चल रहा I है? did. I noticed Hypatia's mental anomalies, but since her symptoms were rather atypical, I secretly took her to मैं Pardis currently बैठ के TI सुमेरु and की आर्क began में quest कर रहा searching था. for a way to return her to her normal self. If I didn't take action,
Hypatia would have already been taken by the Matra to the desert, doomed to a life of exile at Aru village. सिंड्रोने Now को that you पुल किया mention तुमने? it, I knew the Academia has never thought particularly highly Okay. of Lesser Lord बट Kusanali, आईडी में देखना क्या है मुझे तुम्हारे? but I still didn't expect them to do something as arrogant as creating a new god. Looks like I made the right decision by not accepting their invitation. The Doctor and the Balladeer. We have 2 Fatui Harbingers in Sumeru. Sounds like we're in for a bad time. From your description, I don't think they've completed their project. There may still be room for us to intervene. But then, what is the connection between creating a new god and restoring Irminsul? Yeah, it feels like we're still nowhere close to figuring out the sage's goals. Right. We've pretty much gone over everything we need to know, so we should head out. How about you, Tighnari? What are you going to do? I'll stay here for now. तुमको मुझे बताना होगा I कि still मुझे want to तुम्हारे try a अकाउंट few में क्या more देखना things है. to help Hypatia. अगर तुम्हें If you're करेक्टर रिव्यू planning to go चाहिए into तो the desert, या start फिर by कुछ heading for रिकमेंडेशंस Caravan चाहिए. Libat. That'll be your fastest route. Come find me here if there's anything else I can do to help. May the spirit of wisdom go with you. Thanks, Tighnari. Hopefully Hypatia will feel better soon. We're off then.
lively here. So, just past this wall is the desert, huh? Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Oh, if it's this tall, it's gotta be the divine work of Greater Lord Rukkhadevata, right? Enough gawking. Come on, follow me. Alkita? Over here. Oh, Hatham went that way! Let's hurry up and follow him. Wonder what he's up to. This, and that. What the? Where did she go? How did we lose them? They were just here a second ago. More Aramite mercenaries? Who are they working for this time? Anyway, Traveler, it seems like we were being followed again. You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. There's no need to thank me. I've never cared to keep track of personal favors. All I did was correct a mistake I happened to come across. It's a habit I developed at the academia. You really gave Paimon a scare, Alhaitham. We never thought we'd run into you here. Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the academia? Wait, don't tell Paimon that you're here to take us back on their orders! Oh, so you've already landed yourselves on the academia's hit list. I can't say that I didn't expect it. However, had I wished to turn you over to the academia, don't you think you'd already be the Aramite's honored guests by now? Oh, right. You do have a point. I have no interest in running errands for that project. As a scholar, I've always belonged to the camp that promotes researcher autonomy. And these days, you're more fascinating than anything the sages can offer. Not quite. To tell you the truth, I'm still investigating the Divine Knowledge Capsule. Unfortunately, I've run into some difficulties. Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. If I am to get to the bottom of this, I must understand how the capsule first came to be. Which brings me back to you, and why you're so interesting. The leader of Ain al-Ahmar used the Divine Knowledge Capsule right in front of you, and upon seeing him, your expression became perplexed, and you were lost in thought for quite some time. To have that kind of reaction, I think you must have realized something. Are you interested at all in sharing what you've been hiding from me? Alhaitham, you really have a ridiculous eye for detail. What kind of person even notices or remembers stuff like that? So that's your answer. Well, I do work for the academia after all. So considering that, it is indeed wise to keep your cards close to your chest. But that does prove you do have some undisclosed information about the Divine Knowledge Capsule. Am I right? No matter. Rather than simply learning the answers from you, I'd still prefer to investigate on my own. Speaking of, you two are also headed to the desert? That's right! We have the same plan as you! But we don't really have any concrete goals at the moment. Then I'd suggest starting with Aru Village. It's the largest settlement in the desert, so it'll probably have more resources and intel than anywhere else. Well, would you like to head there together? It's always better
better to travel with someone you know. Let's go! Adventure time! Off we go! Before us lies Aru Village, the safe haven of the desert folk. Whoa, this landscape is really something else. What a cool place! Let's go check it out! Sino. Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the Academia. Would you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamatra's wrath? Hatham, do not think you can escape my judgment just because you managed to escape my attack. Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Or would elimination perhaps be a more accurate description? Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard practice for the Matra, as well you know. Seemed to me more like your own personal touch. Who is that, Alhaitham? Did you call him General Mahamatra? Yes. General Mahamatra Sino, head of all the Matra at the Academia. He's a formidable hunter, and the ultimate nightmare for any who have committed academic crimes. You seem to have placed a lot of trust in Alhaitham, to the point of blocking an attack for him. If I were you, I'd never choose to side with him. I wouldn't believe a single word that comes out of his mouth. I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you, stand back and do not seek to defend him any longer. Otherwise, there will be consequences. Has Alhaitham done something wrong? Paimon doesn't think he's as bad as you've made him out to be. I won't waste my breath explaining things. Alhaitham, I saw it during our fight. Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Unless you want me to retrieve it for myself. Very perceptive of you.
Nothing escapes a Matra's senses. Wait, the Divine Knowledge Capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormos? No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit, I'm very curious. What does this capsule mean to you? And why, as General Mahamatra of the Academia, are you all alone in the desert? As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. Have you been given a mission that's, let's say, morally dubious? If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the walls of the Academia? I should have known you'd be difficult to deal with. You two? Ugh! What you would do, Traveler? Paimon feels like we can't trust either of them! Ahem. Well, look at you two, acting all tough and self-righteous over there. Wait, Dia? Great! Finally, someone that we can trust! You gotta help us out here, otherwise these two are gonna start fighting again! Yeah, sure looks that way. Two giants from the Academia duking it out once and for all. Not something you get to see every day, that's for sure. Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues over each other. But how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aaru Village? It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls until you finally learn to respect these grounds. Hey, did either of you hear a word I just said? Whoa, what's going on? The wind's so strong! Is this a sandstorm? Paimon's gonna get blown away! Another sandstorm? What's up with these recently? Hey, all of you, over here, quickly! We have to take cover! Someone's calling for us! Oh, this wind is too strong! Let's get over there! That sounded like Candace. Come on, you two. Jeez, are all of you Academia folks such hard work? Move it! All right, stop yelling. Well, this is pretty awkward. Hey, wanna play काश sessions उसकी with किट three भी people उतनी who अच्छी wanna होती. tear each other limb from limb? Sure, why not? Sounds fun. The air is so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. My sincerest apologies, everyone. This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Please, let me introduce myself. I am Candace, protector of Aaru Village. Our savior has come at last! Nice to meet you, Candace. The name's Paimon. Thank you so much for helping us. हाइड्रो इन्फ्यूजन देती है. There's no need to thank me. It's only right to help each other when the weather gets rough. Wow, she's so gentle and caring, like a nice older sister. Unlike those guys over there. All right, now that we're all better acquainted, we should return to the topic at hand. As a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm, I was observing your conflict from afar, even before the sandstorm started. And now that you have set foot within Aaru Village itself, it is all the more my responsibility to make absolutely sure that you pose no threat whatsoever to us. So please, have an honest and sincere conversation with one another, and put your hostile feelings to rest.
If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with the creatures of the sandstorm. Oh, on second thought, Paimon may have misjudged Candace's character. And that goes for you too, Miss Dia. Do I make myself clear? All right, we got it, Candace. That's what I like to hear. So which of you will begin? I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start talking. Wait, that was you trying to be a mediator? I have nothing to hide, so there's no shame in explaining myself. While Alhaitham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, it's not because I've been assigned a morally dubious mission. Rather, I've chosen to exile myself. Huh? Exile yourself? A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. What little they did report clearly did not match the project's actual progress. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. However, to my surprise, the person responsible for the erroneous data was none other than Grand Sage Azar himself. I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request, but I soon found that all leads and potential pieces of incriminating evidence were carefully concealed from me. I began to realize that they were cautious of me from the very beginning. Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. He even said to me, "The power of the General Mahamatra is granted by the sages. You have no right to judge us." So they really are up to no good. I realized then that to the Grand Sage, देता the Matra are nothing more than tools for the sages to assert and maintain their control over knowledge. The vows that we took, the principles that we strive to uphold, they are meaningless to the academia of today. ये लगता है थोड़ा tangy होता है. I believed it would be wise to flee the academia before the sages had a chance to take action against me. This way, they can no longer see nor predict my actions. I will never give up on this investigation. There's no need for someone else to give me power or authority. Once I find the truth, I will administer judgment by my own name. Sino seems to have the same goal as us. We're all investigating the sages. Plus, now that he's no longer the General Mahamatra, he somehow feels a lot less scary. Well, Sino, if that's your story, then why did you see Alhaitham as a target? When I was investigating the matter in the academia, I overheard a conversation between Alhaitham and a sage. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, Alhaitham? What? Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the Divine Knowledge Capsule, and I think we deserve an explanation. Yes. I was indeed tasked with investigating the Traveler. Alhaitham! After all, Banana the tree. promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me, once you've completed this assignment, I can give you a glimpse of divine knowledge. A most enticing offer. Unfortunately, those academics don't know me at all. Their words contained one key piece of information, namely that divine knowledge indeed exists. That gave me all I needed to know. From my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. Isn't it a little strange they're so willing to share divine knowledge with anyone, even as a reward? So,
I began my own investigation following the lead of the Divine Knowledge Capsule. In the end, I realized my wisdom in committing to this rather than collaborating with the sages. Had I been less guarded, I probably would have ended up like that Ain al-Ahmar mercenary, incapable of remaining sane for long enough to hold a conversation. You mean that the sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane? I'd already given up on the assignment by then. I only told the Academia I was waiting in Port Ormos for you to appear so they wouldn't suspect anything. So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the Divine Knowledge Capsule. Criminals do love to talk about coincidences. Even though I ran into the Traveler by chance, I had no intention of providing assistance to the Academia. Also, you should remember, you were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. That's true. Al-Haytham helped us out at Caravan Rebat as well. Maybe he's telling the truth. I'm willing to apologize, if that's worth anything to you. I took the Divine Knowledge Capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt that it would be best for no one to interact with it before it had been properly studied. After all, curiosity often proves to be the most dangerous thing in this land. You should be well aware, Scribe Al-Haytham, that curiosity can also lead you to danger and suspicion. Answer me this. Did the sages share any information about their project with you? Have I not made myself clear? You and I are both सेतोस क्या distrusted करता है? by मेरे the पास C4 है. Academia. Do you सेतोस really बस एक think they इलेक्ट्रो would tell DPS me है. anything? Fine. Although you haven't completely proven your innocence, I won't regard you as an enemy, for now. As you wish. Good. I'm glad to see you two clearing up your misunderstandings. And now you, Dia. I believe it's your turn. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I spaced out. My situation is pretty straightforward. My employer, Dunyarzad of the Homayani family, is friends with the DPS Traveler and is currently recovering from her illness at home. I had nothing going on, so I decided to return to Main Aaram DPS है, village for a on visit. fielder. I was actually looking forward to a pretty exciting time getting back together with everyone here. But then I saw these two random guys in the middle of a pointless argument. It ticked me off, and things went downhill from there. काफी Is अच्छा है. that all? Well, I will admit that definitely sounds like Definitely your style. free to play है. In that case, देखिए welcome back, sharp shooter Dia. चला सकते हैं उस पर. That's more like it. I missed you all so much, Candace. Whoa! What was that sound? इसकी बस एक चीज अच्छी नहीं है No need to worry. कि उसका जो है ना Now टू that you're no डिफरेंट longer वे at each है other's गेम प्ले का. throats, please, make yourselves at home. I'll take a quick trip outside to clear out some of those creatures in the sandstorm. अभी करंटली मेरे पास वेपन्स ओनली अकाउंट में जेतोस नहीं है. Are you But sure you don't want some backup? उसका केस Fighting in थोड़ा a सा वियर्ड है. sandstorm is not for the faint-hearted. Anyone उसका without चार्ज अटैक गेम extensive प्ले भी training एग्जिस्ट in these करता है conditions और is at a disadvantage. उसका क्या कहते हैं You नॉर्मल needn't नॉर्मल worry. अटैक वाला Yeah, गेम प्ले भी just leave them to एग्जिस्ट करता है. Candace. Don't worry, she's as tough as they come. उसका अल्टीमेट उसको कहते हैं इलेक्ट्रो इन्फ्यूजन काइंड ऑफ देता है. नॉर्मल अटैक की जगह नॉर्मल अटैक में तुम इलेक्ट्रो डैमेज करने That लगते हो. means the sandstorm's over, right? बट तुम उसका चार्ज अटैक भी यूज कर सकते हो और वो स्लाइट एनर्जी यूज कर लेगा तुम्हारे बर्स्ट में से और वो सुपर चार्ज अटैक करेगा फिर बाद में. When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. All right, गेम प्ले थोड़ा let's सा go. स्प्लिट We've बिल्ड been है here उसका. long enough, and the boys are as chatty as the और floor. हाँ, उसका स्प्लिट गेम प्ले की जगह उसका गेम प्ले ही स्प्लिट नहीं है. उसका बिल्ड भी स्प्लिट ही हो जाता है. सेतोस एक अच्छा कैरेक्टर है, नॉट गोना लाई. वो काफ़ी सारे खराब 4 स्टार एग्जिस्ट करते हैं ये गेम के अंदर, तो उस हिसाब से सेतोस एक बेटर डीपीएस कैरेक्टर है. जैसे कि देखो हुआ तुम उसका ये वाला, जैसे यहाँ पे होगा वहीं पे जरा. When aiming, the charge time will be decreased by
285 seconds based on each point of Seto's current elemental energy. मतलब कि उसके पास कितना burst में energy पड़ा हुआ है. Changing time will be reduced to minimum of 0.3 seconds. तो ये इतने से इतना हो जाएगा, या मतलब जो भी है डिक्रीज होगा, और वो कॉस्ट करेगा तुमको 20 एनर्जी. तो जैसे कि उसका जो बस्ट कॉस्ट है वो हाई है, जैसे देखोगे उसका हाई नहीं है, आई मीन डिसेंट है, 60 बस्ट कॉस्ट है. तो उसके एक फुल बस्ट में से तुम 3 चार्ज अटैक निकाल सकते हो. बट ये है कि वो चार्ज अटैक का जो है ना मल्टीप्लायर बहुत हाई होता है. जैसे कि ये सब चार्ज शॉट है, ये चार्ज शॉट लेवल 1 है, और ये शैडो पियर्सिंग शैडो शॉट डैमेज है. इसका 140% डैमेज अटैक पे और 134 डैमेज एलिमेंट्री मास्टरी पे. तो ये स्प्लिट स्केलिंग होती है इसकी. बट ओवरऑल उसका डैमेज मल्टीप्लायर नॉर्मल से हायर है. काफ़ी लोग उसका चार्ज अटैक गेम प्ले प्रेफर करते हैं, पर उसका नॉर्मल अटैक गेम प्ले ज़्यादा बेटर होता है. अगर मेरे पास वो करेक्टर होता करंटली दिखाने के लिए, जैसे मेरे पास है नहीं वो दिखाने के लिए शायद से. मेरे पास नहीं है वो. अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग क्या करते हैं कि उसका बस्ट गेम प्ले यूज़ करते हैं, पर वो उसकी जगह उसका क्या वॉक कैंसिल यूज़ करते हैं. जैसे कि 1 2, और जो थर्ड अटैक है ना, जैसे कि फारूजान का थर्ड अटैक बहुत फास्ट है, उसका फास्ट नहीं है. उसका थर्ड अटैक वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है. जैसे कि इसका फिफ्थ वाला अटैक है ना, जैसे उसने बहुत टाइम लिया, इससे बहुत ज़्यादा टाइम लेता है उसका थर्ड अटैक. तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, उसके 2 अटैक यूज़ करते हैं और वॉक कैंसिल कर लेते हैं. तो इसका वॉक कैंसिल नहीं हो रहा. ये चीज़ करते हैं. अभी फारूजान पे नहीं हो रही क्योंकि फारूजान को वॉक कैंसिल की ज़रूरत पड़ती नहीं है. कोई और कैरेक्टर है नहीं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अच्छे से. Got work for me. हाँ, जैसे इसका लास्ट वाला देखा ये सेतोस भी अपना थर्ड वाले उसमें नॉर्मल अटैक में ऐसे ही है, वाइंड अप एनिमेशन करता है. जैसे कि ये देखो उसने 2 एरो शूट करे, तो इसको तुम क्या कहते हैं, थर्ड वाला कैंसिल ही कर सकते हैं लिटरली वॉक एनिमेशन के साथ. वैसे जिससे वो थर्ड वाला अपना ना करे. अगर थर्ड वाला करोगे तो थोड़ा डीपीएस लॉस होगा. पर नए प्लेयर्स के लिए ठीक नहीं है वो खेलना, क्योंकि जब भी तुम्हें रेजर जैसे कैरेक्टर्स मिलते हैं, क्योंकि रेजर का जैसे अटैक पैटर्न देखोगे तो टेक्निकली उसके पास चार अटैक होते हैं, 4. बट लोग उसका चौथा अटैक कोई यूज़ नहीं करता है, क्योंकि उसका चौथा अटैक बहुत टाइम लेता है. जैसे 1 2 3 और ये चौथा वाला बहुत स्लो है. तो तुम बस ये 3 स्पैम करके जंप कर सकते हो. वैसे उसके बाद ऐसे अर्लिकीनों का भी तो होता है, जिसमें वो क्या कहते हैं, नॉर्मल वॉक कैंसिल करते हैं उसके अटैक मैक्सिमम डैमेज आउटपुट के लिए. से तो अच्छा कैरेक्टर है. ज़्यादातर लोग उसको इसलिए यूज़ करते हैं कि उसका डीपीएस पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है. कोई उसका चार्ज अटैक गेम प्ले प्रेफर नहीं करता, क्योंकि तुम 3 ही शॉट निकाल सकते हो मैक्सिमाइज करके भी, और उसके ऊपर एनर्जी रिचार्ज भी चाहिए होगा. अगर तुम्हें उसका चार्ज अटैक गेम प्ले करना है तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिचार्ज चाहिए होता है, वो भी उसके अलग में, क्योंकि वो एनर्जी, अगर तुम उसका चार्ज अटैक गेम प्ले यूज़ कर रहे हो तो तुमको एनर्जी रिचार्ज भी चाहिए, उसके ऊपर अटैक भी चाहिए, और उसके ऊपर एलिमेंट्री मास्टरी भी चाहिए. तो 3 स्टार्ट बिल्ड करने पड़ जाते हैं, तो इसलिए कोई ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, ऐसा मुझे फीलिंग है. पर ना उसके लिए बेस्ट बो वही होता है, टाइनरी का बो, या फिर शार्प शूटर होते हैं वो स्ट्रिंगलेस जो है, स्ट्रिंगलेस लोग यूज़ कर लेते हैं उस पर, जो टिगनारी पे लोग यूज़ करते हैं. कौन से के बारे में बताना है? I think ये वाली कटसीन के बाद में देखते हैं. They just keep coming in waves. I've lost count of how many I've defeated. Before I realized it, even the sandstorm had stopped. Here comes another wave! Leave this round to us.
I got interrupted earlier, but now I have something to take my anger out Wait, on. wait, wait. वो डेया यूज करने के लिए देंगे हमको? It's been a while since I've seen the flame main in action. I'll leave these to you then. I'll be sure to put on a good show. Let's go. Like, please tell me डेया यूज करने देंगे वो? Fuck off भाई, fuck off. इतना डेया चिल्ला रही थी कि लेट्स गो फाइट और वो हमको खेलने में नहीं दे रहे डेया को. नाइस यार. I'll protect us. Let's light it up! Eat this! Teamwork is dream! Here comes another wave. When are they ever gonna let up? रेजर को एक यूज करने का एक ये भी प्रॉब्लम है कि जो वो वुल्फ समन करता है वो बहुत ज़्यादा डैमेज तो करता है पर वो आधी स्क्रीन गिरता है. उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं देता कि क्या हो रहा है स्क्रीन पे. Nice and spicy. पर ये फवोनियस प्रो कभी करेगी ही नहीं मुझे लगता है. The creature stopped appearing. Was that the last of them? What we fought just now was probably the aftermath of the sandstorm. So we should be safe for the time being. Well fought, everyone. No injuries, I hope. ये कौन आया? Huh? Who are you? My apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full taking care of the village's elderly and children. I am the chief of Aru village. Everyone usually calls me Uncle Anpu. Anpu के साथ नाम होता है. Sir, Sorry for the trouble. I am also originally from the desert, but I have not been back for some time now. May I ask if such sandstorms are common? I can't say they've always been common, but recently the storms have become increasingly severe and frequent. Besides sandstorms, we also occasionally get earthquakes. According to an investigator who stayed in the village a while ago, these unusual natural phenomena are related to the withering of Irminsul. Another effect of Irminsul's withering. So, Irminsul's withering causes अगर withering 4 स्टार zones में in the DPS forest रेटिंग and देनी होगी तो तुम्हारी sandstorms and प्रायोरिटी क्या earthquakes रहेगी? here in the desert? Everything in the natural world is inextricably connected to Irminsul. These regional शैंगलिंग symptoms probably can सबसे टॉप पे indeed be a रहेगी reflection honestly. of Irminsul's नहीं present नहीं state. गेमिंग एक्चुअली टॉप पे. मैं भूल गया Everyone in गेमिंग के Aru बारे में. village needs to take good care of गेमिंग themselves. ऐसा कैरेक्टर है जो 400 के DPS का पोटेंशियल Speaking of रखता है. which, why haven't I seen a single village keeper वो since भी I got अपने here? ईच इंस्टेंस में. Village keeper? वो भी एक 4 स्टार वेपन के साथ में जो उसके उसी के लिए बना है. Does your curiosity know no bounds? Yes, तुमको Village नहीं मालूम keeper is शैंगलिंग how DPS. Aru village refers to mad scholars, You know exiled here DPS by सब the DPS academia. quite same thing. DPS का Most of काम them are होता है scholars who डैमेज lost their पर सेकंड sanity देना. after a period of training सब in the DPS में Avidia भी forest. सब DPS भी DPS ही The काउंट होता है academia टेक्निकली. believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of other scholars. So, they're forcibly exiled to the desert. Though if you ask me, it's all a boatload of nonsense. वो तो बस टर्म्स बना दी गई हैं. वन ऑफ द DPS, हाइब्रिड DPS, सब DPS, बस्ट DPS, ऑल आर काइंड ऑफ सेम. एक ऑन फील्ड DPS रहना, अभी ऑन फील्ड रहने से कोई DPS नहीं होता. जैसे कि अगर हम सुक्रोस को देखेंगे तो वो एक ऑन फील्ड ड्राइवर है, ऑन फील्ड DPS नहीं है. तो सिर्फ ऑन फील्ड रहने की वजह से कोई DPS नहीं बनता. प्रायोरिटी लिस्ट में गेमिंग यस डेफिनेटली टॉप पे रहेगा और सेथोस भी काफ़ी क्वाइट हाई पोजीशन पे है ऑनेस्टली. और अनफॉर्चुनेटली एम्बर भी है एक्चुअली. ये कि एम्बर का ऑनेस्टली डैमेज पोटेंशियल 200 के तक जाता है अगर तुम्हारे पास उसका राइट क्या कहते हैं चीज़ें हों उसके उसको देने के लिए. उसका चार्ज अटैक गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. लोहीन एक काइंड ऑफ हाइब्रिड केस है. उसका उसके सब DPS के साथ में डैमेज इंक्रीज होता है.
तो वो काइंड ऑफ डीपीएस ड्राइवर है। वो एक क्या कहते हैं काइंड ऑफ नई कैटेगरी को ही बिलोंग कर रहा है देखा जाए तो। वो डीपीएस ड्राइवर है क्योंकि उसका खुद का डैमेज पोटेंशियल इनफ है, बट उसको एक टीम ड्राइव करनी चाहिए तो उसका डैमेज पोटेंशियल आता है और ज़्यादा। वो अकेले भी चल सकता है, उसको हाइपर कैरी बना सकते हो तुम, बट वो शाइन करता है अपने क्या कहते हैं अपने सब डीपीएस को ड्राइव करने से। Alas, that's exactly what we've been trying to investigate. One by one, the village keepers have been mysteriously disappearing without a trace. सुक्रोस ऑन दी अदर हैंड एक अच्छी सपोर्ट है क्योंकि वो वीवी श्रेड देगी, वो ऑन फील्ड तुम्हारा डैमेज स्वेल करेगी, तो स्वेल करने का भी डैमेज होता ही है। I've had encounters with those people in the past. I'll see what I can do to help. The बट Mantra are the मेनली ones सुक्रोस, responsible for their exile. जैंगलिंग और Now that you're क्या no नाम है longer with जिनशो them, का ही are you डैमेज पे trying to alleviate your डैमेज यूज़ guilt and करती है atone for your past या sins? ड्राइव करती है उनका डैमेज। I'm fascinated by how you think. Mock me if you will, but if you are guilty, I will eliminate you, regardless of my position or identity. Oh, you're the former General Mahamatra. You must be an expert in these kind of investigations. Thank you for your help. ना डीप देखा जाए तो टीयरलेस काइंड ऑफ स्टूपिड होती है। Is it because you're reminded of Hypatia? Oh, these poor scholars. First they lose their sanity, now this! We need to help get them back home, safe and sound. But, is it really a good idea to tag along with Sino? You seem like you really हम don't लोग trust बेडो के him. बारे में नहीं भूल सकते, बेडो भी बहुत अच्छी डीपीएस है और सब डीपीएस भी है। हाँ टीयर लिस्ट काइंड ऑफ सेंस नहीं बनाती ऑनेस्टली देखा जाए तो। I'll be grateful for the assistance. एक करेक्टर एस टीयर No हो doubt सकता है you will बट do a अगर तुम better ढंग से job than बिल्ड ना some of करो my उसको तो former फिर वो subordinates. एफ टीयर भी है फिर I'd देखा start जाए by तो। finding a और एक spot to share करेक्टर what we लिटरली know एफ so टीयर हो far. सकता है बट राइट इक्विपमेंट के साथ वो जस्ट इनफ डैमेज दे सकता है। पावर लेवलिंग डिफरेंट होती है और आरएनजी पे भी बेस्ड होती है। क्या पता कि तुमको क्या कहते हैं क्रिम्सन विच के ज़्यादा अच्छे पीसेस मिल जाएं और तुमको कभी भी वीवी के अच्छे पीस ना मिले। बेडो यस, अनफॉर्चुनेटली बेडो तुम्हें पसंद नहीं है, बट फिर भी बेडो एक बहुत अच्छी डीपीएस भी बन सकती है, ऑन फील्ड डीपीएस, सब मेन डीपीएस और सब डीपीएस भी कर सकती है। वो शील्ड भी दे सकती है, काफ़ी वर्सेटाइल यूनिट है वो। बट ये है कि जो भी रोल्स वो फिल करती है, कुछ कैरेक्टर्स उससे ज़्यादा अच्छा वो रोल फिल कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग उनको उसको यूज़ नहीं करते इतना। रेजर ऑन दी अदर हैंड एक बहुत अच्छा फिजिकल मेन डीपीएस है, बट कोई यूज़ क्यों नहीं करता? क्योंकि Although I've sent उससे बेटर myself into ऑप्शंस एग्जिस्ट exile, करते हैं। I'm still doing essentially the same things as before. Do you still have any questions for me before we start our investigation? One of my former subordinates told me that this title has its origins in a strange incident. नहीं, बेड किसने कहा बेडो की यार इशू The का? academia has long exiled mad scholars to Aru village. A mysterious phenomenon exists here. When mad scholars first arrive, they are as incoherent and deranged as before. But after spending some time here, they invariably begin to calm down. Initially, the people of Aru village greatly resented having to take in the mad scholars. But a strange incident one night changed that. Aru village was struck by the strongest earthquake in living memory. Seeing buildings on the verge of collapse all around him, the then chief of the village was preparing to Okay. take everyone to safety. Suddenly, ये किसने बोला कि he साइनो का noticed a डैमेज mad कम है? scholar crouching in a corner, caressing the ground with his hands. देखो साइनो Soft टार्टेग्लिया green light ये radiated वन ऑफ from दोज her, कैरेक्टर हैं like a जिनका divine डैमेज glow पोटेंशियल against the बहुत ज़्यादा है। backdrop of night. डैमेज पोटेंशियल बहुत ज़्यादा कहना गलत है वैसे, बट डैमेज पोटेंशियल जस्ट इनफ है जितना एक 5 स्टार का होना चाहिए। काफ़ी डिसेंटली गुड डैमेज पोटेंशियल है उनका, किसी भी 4 स्टार से कम नहीं है डेफिनेटली। पर उनकी और प्रॉब्लम्स आती हैं उनके साथ में, क्योंकि इन करेक्टर्स को एक्चुअली एनर्जी का इशू रहता है। साइनो को एनर्जी का इशू रहता है। शाइनो तुम ज़्यादातर उसके सैंड्स पे ईएम चलाना प्रेफर करोगे, बट वो ईएम तुमको चलाने नहीं देगा क्योंकि वो एनर्जी इश्यूज लेके आएगा अपने साथ में।
या तो तुमको उसको बैटरी करना पड़ेगा ऑफिशियल वगैरह जैसे करेक्टर से जो कि सब डीपीएस प्रोवाइड करेंगी, थोड़ी बैटरी भी करेंगी इसको, तो बेटर है। डिसेंट ओनली मैं ये नहीं बोलूँगा, देखो डिसेंट ओनली का अगर मैं बात करूँ तो डिसेंट तो डेया भी है, बट मैं डेया को साइनो से कभी कंपेयर नहीं करूँगा क्योंकि साइनो और टार्टेग्लिया जैसे कैरेक्टर्स काफ़ी अच्छे होते हैं अगर तुम उन पर राइट इन्वेस्टमेंट करोगे तो, क्योंकि वो अपने सेट ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, इसलिए लोग उनके साथ डील नहीं करना चाहते। अभी जब भी तुमको गेम एक ऐसा कैरेक्टर ऑफर करता है न्यूलेट जैसा, जिसके ऊपर तुम्हें ईआर बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर तुम्हें कोई स्पेसिफिक आर्टिव क्या कहते हैं सबस्टैट बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, उसको एचपी दे दो, उसको क्रिट डैमेज जितना दे सकते हो दे दो, और वो मोर देन डैमेज करने लगता है अपने अपने बिल्ड के हिसाब से, तो लोग फिर इन करेक्टर्स के साथ क्यों डील करेंगे जो कि बिल्ड करने के लिए थोड़े हार्ड रहते हैं, है ना। वही चीज़ सुमेरु के साथ ज़्यादातर यही प्रॉब्लम थी। सुमेरु ईएम पे ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहता था अपने करेक्टर्स के साथ में, इसलिए ब्लूम, हाइपर ब्लूम, ये सब टीम्स आ रही थी, हाइब्रिड टीम्स, बट इसीलिए ज़्यादातर 4 स्टार सुमेरु के डेड हो गए, क्योंकि ज़्यादातर 4 स्टार्स क्या कर रहे थे वो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, वो अपनी किट के साथ ऑनेस्ट नहीं है। जैसे कि सेतोस को देख लो, उसका स्प्लिट बिल्ड है बट उसको एनर्जी इश्यूज आएंगे अगर वो स्प्लिट बिल्ड करोगे तो, उसको ईएम देना पड़ेगा, बट अगर तुम उसको ईएम दोगे तो फिर उसको एनर्जीज के इश्यूज आएंगे। ऐसी सेम साइनो है, साइनो को भी ईएम चाहिए, एग्रीवेट है वो, एग्रीवेट वगैरह करने के लिए, बट तुम उसको वेपन पे प्रोबेबली क्रिट डैमेज देना चाहते हो और तुम ईआर नहीं दे पाओगे उसको, और उसका बर्स्ट कॉस्ट 80 से ज़्यादा होता है शायद से, उसका बर्स्ट कॉस्ट बहुत होता है। No, I got that. Why no one want to build Ningguang even though she can hit 100k? Ningguang का थोड़ा केस डिफरेंट है। Ningguang इसलिए नहीं कि वो अपने सेट ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ आती है, Ningguang लोग इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि जियो कैटलिस्ट काइंड ऑफ सेंस नहीं बनाता। जियो कैटलिस्ट और उसका बर्स्ट कॉस्ट भी कम है, उसका बर्स्ट कॉस्ट 40 है, तो निग्लिजिबल ईआर रिक्वायरमेंट्स है उसको, बट कोई उसको यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि एक कैटलिस्ट करेक्टर्स ज़्यादातर अपने रिएक्शन डैमेज पे स्केल करता है, बट क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन लूनार आने से पहले उतना अच्छा था भी नहीं, और उसको मेन डीपीएस चलाना सेंस नहीं बना रहा था क्योंकि ऑलरेडी जो जियो करेक्टर एग्जिस्ट कर रहे थे, क्या नाम है उसका, नोएल वगैरह जैसे, उनका डैमेज बहुत ज़्यादा है उससे, बस नोएल को एनर्जीज के इशू है, जियो कैरेक्टर्स के लिए सेंस ही नहीं बना रहा था। निंगवांग निंगवांग अच्छी कैरेक्टर है, बट कोई क्यों यूज़ करेगा उसको, वो चीज़ जस्टिफाई नहीं हो सकती क्योंकि उससे अच्छे कैरेक्टर्स अभी एग्जिस्ट करते हैं, इवन 4 स्टार 5 स्टार्स। 100 के एक टाइम पे बहुत अच्छा डैमेज था, बट अभी 100 के उतना अच्छा डैमेज है ही नहीं, आधे से ज़्यादा एनिमीज़ की मिलियंस में एचपी होती है। Despite the powerful tremors that ripped through the ground that night, all the houses remained upright, almost as if they had grown roots reaching deep into the ground. मैंने साइनो को In the बिल्ड end, किया है, not मैं a बोल single सकता हूँ building साइनो collapsed, का बहुत and डैमेज no है, one was hurt. पर साइनो को उसकी टीम चाहिए, उसका ईआर चाहिए। After that, the people of Aru village treated the mad scholars with greater kindness, and began to refer to them as the और एक village और भी keepers. चीज़ है, अगर तुमको पता है कि साइनो का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, साइनो का एक्चुअली कोई उसका प्रॉब्लम है नहीं, साइनो का बहुत ऑकवर्ड चीज़ ये है कि उसका अल्टीमेट बहुत ज़्यादा देर लास्ट करता है, टू द पॉइंट कि उसकी टीम के सब बफ्स चले जाते हैं, हीलिंग चले जाते हैं, सब कुछ चला जाता है, तभी भी उसका बस्ट रहता ही है, और अगर तुम स्विच करोगे तो वो इंस्टेंटली चला जाएगा, तो उसकी साइकिल्स काफ़ी ऑकवर्ड होती हैं, ये है। मेरे को एक बार देखना है कि उसका स्किल का ड्यूरेशन क्या है। एलिमेंटल बर्स्ट, ओके यहाँ पे कहीं पर लिखा नहीं है, एनीवेज छोड़ो, गेम में ही देखना पड़ेगा। A soft green light? A mad scholar protecting Aru village? Paimon thinks so too. Actually, Sino, do you know if any of the mad scholars continued to wear their Akasha terminals at Aru village? In theory,
They would continue wearing them so the academia could still monitor their activities. With that said, the main Akasha system would no longer have any interaction with them. Oh, no wonder! Everything makes sense then! Add in the fact that they calmed down, it was probably Nahida who calmed them. If you are able to draw a conclusion from this one story alone, then it appears you possess much more information than I do. So, what do you make of the story? Really? Lesser Lord Kusanali. What? You don't believe us? Lesser Lord Kusanali was आज definitely बैनर का using दिन है the ना? Akasha to give her power to the mad scholars! No, it's not so much that I don't believe you. लोग ज़्यादातर अपना गेम I'm खेल रहे just होंगे struck by your reasoning. या फिर Lesser Lord Kusanali, क्या कहते the हैं current अपने Dendro Archon. Is she पता नहीं really अपने ही active गेम in खेल रहे होंगे Sumeru? बैठ के ग्राइंड कर रहे The होंगे academia has always placed far greater importance on the late Greater Lord और वैसे भी Rukkhadevata. अभी करंटली कितना They've 6 more बज or रहे हैं less 6 ignored बजे के Lesser टाइम पे Lord Kusanali, लोग अपना क्या and कहते हैं I've never शाम का had any चाय reason पीते to हैं doubt वॉक their पे जाते views. हैं काफ़ी चीज़ें होती हैं In करने के लिए addition, I've never heard any stories about Lesser Lord Kusanali and her deeds. To me, she might as well have been a god that never existed. No way! Nahida definitely exists! She's a... How should Paimon put it? She's a good Archon who's kind and wise. Even if she says weird stuff sometimes. I've spent many years interrogating criminals, so I can easily tell when someone is lying. Good! Then you should know that we're telling the truth. That look in your eyes. I've never seen that from a liar. You two really must have met Lesser Lord Kusanali. How can this be? To think, our Archon has been amongst us this entire time. Alright, now it's our turn to put our skills to good use for this investigation. India is a home of tea. India is a home of tea, and I only who don't like tea, milk, coffee. Of course, I'm lactose intolerant. मुझे उस चीज़ का नहीं मालूम बट मैं भी चाय नहीं पीता मेरे पास एक क्या कहते हैं बिग बैग ऑफ कॉफ़ी रखी हुई है जो मैं कभी यूज़ भी नहीं करता बस रखी हुई है बस But easier said than done, especially since we don't have any leads. Maybe we can start by knocking on some doors. Excuse me, are you here to help me find my grandpa? Huh? Who are you? By the sounds of it, a resident of this village. My name is Isak. You'll help me find my grandpa, right? Isaac, अरे Is इसको your फेक grandpa नाइडा a mad बनाएंगे scholar? याद है मुझे Hey, don't say that. Grandpa is just Grandpa. Why do you have to call him that? It's not like he's a bad person or anything. The person you're referring to is not a local, yet you are. Why do you call him Grandpa? Grandpa is just Grandpa. He's my family. I heard everything you said to the village chief. Please, you gotta take me with you. I want to find my grandpa. I swear I'll help. I won't be a nuisance. Ah, so you're the one who was eavesdropping on us around the village chief's house. I was planning to go out and take care of whoever it was, but I had a vague feeling that they didn't harbor any ill intent. Whoa. Hatham wasn't kidding about Matra having sharp senses. Sino, he's just a kid. All he wants is to find मुझे his नहीं पता भाई grandpa. कौन लोग Let's हैं वो find a way to help him. Sorry. I was only listening in because I wanted to know where Grandpa went. Honest. If you don't believe me, you can ask Miss Candace. All right. But first, let's confirm the facts with Candace. आई थिंक अभी मैं काफ़ी थक गया हूँ यहाँ से मैं स्टोरी अभी कल कंटिन्यू करूँगा
यहाँ पे बारिश ही होती रहती जब भी मैं आता हूँ। एनीवेज आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। You don't listen to K-pop genre, that's why I don't know। नहीं मैं नहीं सुनता भाई, मैं गाने बहुत रेयरली सुनता हूँ। मुझे को जब भी मन करता है तो मैं लो-फाई वगैरह सुन लेता हूँ। अच्छा हाँ, रियल को एक तरह चेक कर लेते हैं कि साइनों का बस्ट कॉस्ट क्या था। ये सारी चीज़ें यार याद करने के लिए मुश्किल पड़ती हैं। पता नहीं कुछ लोग हैं जिनको ये सब चीज़ें याद रहती हैं, क्यों याद रहती है पता नहीं। उसका बस्ट कॉस्ट है, उसका बस्ट कॉस्ट 80 है भाई। उसका वन ऑफ द हाई बस्ट कॉस्ट है। अनफॉर्चुनेटली एक करेक्टर है गेम के अंदर जिसका 90 है। मुझे याद नहीं आ रहा करेंटली वो कौन है। आई होप वो लीसा ना हो, क्योंकि लीसा का भी 80 होता है ना। इस लीसा का भी 80 होता है। कोई तो है जिसका बस्ट कॉस्ट 90 है। राइडन, राइडन का 90 होता है। या 90 ऑफ कोर्स राइडन शोगन, बट वो तो ईआर बिल्ड के लिए रहती है। एनीवेज तो मैं क्या कर रहा था, एक बार आज का हो गया, आई थिंक थक गया मैं। अभी स्टोरी हम कल आके कंटिन्यू करेंगे। एक बार रियल को एक प्रीमो अकाउंट्स चेक कर लेते हैं। आई डोंट नो कि ये वेपन्स मेरे लिए उतने अच्छे हैं कि नहीं, लेकिन increase elementary mastery by 100, gain mirror of 95 for 15 seconds, equipping character creates a shield, the current active member deal 28% increased damage to opponent। तो शील्डर्स के लिए बेटर है ना ये तो। मेरे पास कितने कैटलिस्ट शील्डर हैं, और ये ऑफ कोर्स मैं काम नहीं कर रही, ये किसी के काम नहीं आएगा क्योंकि अकेली सिंज होने ही इसको यूज़ कर सकते हैं अभी के लिए। नहीं वेज देखते हैं हमारे पास कितने पुल्स हो चुके हैं। 73 प्लस 11 कितने हुआ, 84। अपने पास अभी 84 है, और होपफुली हम थोड़े से और इकट्ठा कर पाए राइडन के बैनर के आने से पहले। तब तक जो भी लोग पुल कर रहे हैं भाई गुड लक, जो लोग पुल नहीं कर रहे हैं गुड लक भाई, होपफुली तुम लोग सेव कर पाओ।